વાલા વૈષ્ણવો, કહેવાય છે ને કે પરિવર્તન સંસાર કા નિયમ હૈ. આપણા રોજિંદા જીવનમાં પણ આપણે દરરોજ એકને એક રૂટીન કાર્ય કરતા હોઈએ તો તેમાં આપણને કાં બ્રેક લેવાનું મન થાય અથવા કંઈક નવું કરવાનું મન થતું હોય છે. આ માણસનો સ્વભાવ છે. તો આપણે નિત્યમાં સત્સંગ કરતા હોઈએ, તેમાં ભાગવતજી, 84-252 વૈષ્ણવ વાર્તા, શિક્ષાપત્ર, આ બધા જ પુસ્તકોનો આનંદ લેતા હોઈએ છીએ. ઘણી વખત આપણને એવું થાય કે આ બધા પુસ્તકો તો વાંચી લીધા છે, બધી વાર્તાઓ પણ યાદ છે, બધા પ્રસંગો પણ યાદ છે, તો કંઈક નવું કરીએ. એટલે આજે હું મન આતુરી આપ સર્વે માટે મધુરાષ્ટક રસપાન એક નવા જ રૂપમાં લઈને આવી રહી છું. હરિગુરુ વૈષ્ણવની કૃપાથી, પ્રભુ પ્રેરણાથી આપણે આ સત્સંગ કરી રહ્યા છીએ. કેમ કે મધુરાષ્ટકમાં શ્રી ઠાકોરજીના સ્વરૂપનું એટલું સુંદર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે આપણા રોમ રોમ પુલકિત થઈ જાય. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એવા શ્યામ સુંદરના સ્વરૂપનું વર્ણન શ્રવણ કરીને આપને પણ આનંદ આવશે અને એક નવા જ રૂપમાં સત્સંગ થશે. એટલે આપ નિત્યના સત્સંગમાં પણ આ રીતે સત્સંગ કરી શકશો. એવું સુંદર છે. વાલા વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. હું મન આતુરી આપ સર્વે વૈષ્ણવોનું મધુરાષ્ટક રસપાનના અલૌકિક સત્સંગમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને શ્રી ઠાકોરજી શ્રી વલ્લભના ચરણારવિંદમાં એ જ વિનંતી ધરું છું કે આપની પ્રેરણાથી આ સત્સંગ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આપ અમારા આત્મપટલ પર આ સત્સંગને ધારણ થાય એવી કૃપા કરજો. વાલા વૈષ્ણવો, શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી મધુરાષ્ટક તાત્પર્યમાં આજ્ઞા કરે છે કે આનંદાત્મક સ્વરૂપના એક એક અંગનું ચિંતન કરતા તે અંગથી પ્રભુએ કરેલી લીલાનું આશ્રય ચિંતન કરવાથી ભગવત સ્વરૂપની ભાવના સિદ્ધ થાય છે. ભગવત લીલાનો અનુભવ પ્રાપ્ત કરનાર ગોપીજનોએ પ્રભુના તે અંગનું સ્મરણ કરી તે અંગની મધુરતાના સ્વરૂપનું પરસ્પર વર્ણન કર્યું છે. એક ગોપીજને પ્રભુના અધરનું, બીજાએ પ્રભુના મુખનું, તો ત્રીજા ગોપીજને પ્રભુના નેત્રનું વર્ણન કર્યું છે. આમ બધા જ ગોપીજનોએ પ્રભુના એક એક અંગની મધુરતા દર્શાવી છે. એવો દેવાસ્મદાચાર્યથી ગુપ્તમ નિરૂપિતમ. શ્રી હરિરાયજી આજ્ઞા કરે છે કે લીલાની આ અતિ ગુપ્ત વાત શ્રી આચાર્ય ચરણે મધુરાષ્ટક ગ્રંથમાં પ્રગટ કરી છે. ટૂંકમાં મધુરાષ્ટક સ્તોત્રનો અર્થ સમજીને તેનો પાઠ કરવાથી ભગવત ભાવ, લીલા ભાવ તથા સ્વરૂપ ભાવના સિદ્ધ થઈ શકે છે. એટલે આવું સુંદર આ સ્તોત્ર છે. અને શ્રીમદ પ્રભુચરણ પણ આજ્ઞા કરે છે કે હે રસિકો, સાંપ્રદાયિક સાહિત્યમાં તમે સ્વચ્છંદતાથી વિહરો, કિંતુ એક પ્રાર્થના છે કે જે ભગવાનના અનુગ્રહ રસથી સિંચાયેલ ન હોય, લૌકિક વિષયોમાંથી જે નિવૃત્ત ન થયા હોય એવા માલા તિલકધારી અહમ મન્ય વૈષ્ણવોએ ઉક્ત પ્રકારનું દિવ્ય સાહિત્ય જોવું ન જોઈએ. એટલે અલૌકિક ભાવના રાખીને જ આ સ્તોત્રનું રસપાન કરવાનું છે. રચેલ અષ્ટકોની રચનામાં આ એક અતિ રસમય મધુરાષ્ટકની ગણનામાં છે. શ્રી કૃષ્ણની સુંદરતાનું વર્ણન તો શાસ્ત્રોમાં, સાહિત્યમાં, કીર્તન ભજનોમાં અનેક રીતે જોવામાં આવે છે. જેમ કે બિંબાફળ જેવા લાલ ચળકતા, રસમય ઓષ્ઠ, સિંહ જેવી કટી, કદલી ખંભ જેવા નિતમ, હરણ, મીન, કમળ જેવા નેત્રો, શંખ જેવી ગ્રીવા, હસ્તકમળ, ચરણકમળ વગેરે. છેલ્લે જેમ વેદ બ્રહ્મને વર્ણન કરીને થાકીને નેતિ કહી દે છે, તે મહાપ્રભુની સુંદરતાના વર્ણનમાં છેલ્લે કોટી કંદર પલાવણ્ય, કોટી મન્મથ કહી દે છે. પ્રભુ કરોડો કામદેવથી પણ સુંદર, તેને પણ મોહિત કરવા વાળા સૌંદર્યવાન છે. શ્રીનાથજી. પરંતુ અહીંયા અષ્ટકમાં સુંદરતાની સાથે શ્રી કૃષ્ણના સ્વરૂપમાંથી છલકાતા માધુર્યનું વર્ણન શ્રી વલ્લભાચાર્યજી કરી રહ્યા છે. પ્રભુના અંગ અંગ મધુર, તેનો પરિકર, ગોપ ગોપી, ગાયો, વેણુવેત્ર, તે લીલા રમણની સૃષ્ટિ બધું જ મધુર છે.
કારણ કે તે દરેક તત્વથી પરસ્પર આનંદ જ વહેંચાઈ રહ્યો છે. કારણ કે કૃષ્ણ એટલે જ આનંદની સત્તા. પ્રભુ તે દરેકના આત્માનો રસ પોષી રહ્યા છે અને આ નિજજનોના રસનું પોષણ કરવા વાળું સ્વરૂપ તે જ વેદે વર્ણવેલ બ્રહ્મ મૂળ ધર્મી સ્વરૂપ, પરબ્રહ્મ રસોવય સહ સ્વરૂપ. તે સ્વરૂપ જ સ્વકીય જનોનો નિષ્કામ માધુર્ય રસ, વાત્સલ્ય રસ, સખાભાવ, હાસ્ય ભાવ વગેરે સટકનું પ્રાકટ્ય કઈ રીતે થયું. શ્રી મધુરાષ્ટકમ શ્રાવણ મહિનાની તે મહાનિશી શ્રીમદ ગોકુળમાં ગોવિંદ ઠકુરાણી ઘાટ ઉપર શ્રી વલ્લભાચાર્યજીની સન્મુખ સાક્ષાત શ્રી ગોકુલચંદ્રમાજી જે રસરૂપ ધર્મી સ્વરૂપ કહેવાય છે તે પ્રગટ થયા છે. પાછળ જ ભક્તિ સ્વરૂપ કૃપાના ધોધ સમા શ્રી યમુનાજી વહી રહ્યા છે. જાણે તેમણે પ્રભુને પોતાની નિકુંજમાંથી બ્રહ્મ સંબંધનું કૃપાપૂર્ણ કાર્ય કરવા મોકલ્યા હોય. તે સંપૂર્ણ રસથી ભરેલા સ્વરૂપના સાક્ષાત દર્શનથી જાણે શ્રી વલ્લભાચાર્યજી તે સ્વરૂપના મધુર રૂપ, તેમની મધુર લીલાઓ, તે લીલા સૃષ્ટિ, તેનું મધુર પરિકર, તે સ્વરૂપ સાથે સંલગ્ન સર્વ કાંઈ પણ મધુરતાથી ભરેલ આવી અનુભૂતિ કરતા હોય તેમ શ્રી વલ્લભાચાર્યજીના હૃદયમાં પણ તે મધુરતાનો સાગર જાણે ઉમટીને બહાર છલકાઈ રહ્યો. તે રસથી પ્લાવિત થયેલ તેમના સ્વરૂપના ઉદ્ગાર રૂપી આ અષ્ટક પ્રગટ થયું. જાણે તેના નિજજનોને પણ તે છલકાતા રસના છાંટા આપવા માંગતા હોય તેમાં અષ્ટક પ્રગટ થઈ ગયું હોય તેવું લાગે છે. શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી કહે છે, રસાત્મા રસરીતિજ્ઞો રસલીલા પરાયણઃ રસાત્મક ગોપી રસિકઃ સ કૃષ્ણ શરણમ મમ. અધરમ મધુરમ. આપણે પેલો શ્લોકનું ગાન કરીશું અને ત્યાર પછી અધરમ મધુરમનું પાન કરીશું. અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ નયનમ મધુરમ હસિતમ મધુરમ હૃદયમ મધુરમ ગમનમ મધુરમ મધુરાધિપતેરખિલમ મધુરમ મધુરાધિપતેરખિલમ મધુરમ. અધરમ મધુરમ. પ્રભુના અધર મધુર છે. રસલીલામાં અધરનું પ્રાધાન્ય વિશેષ છે. ભાવને વ્યક્ત કરવાનો મુખ્ય અંગ અધર છે. માતાને પણ પોતાના બાળક પર અતિ સ્નેહ ઉભરાય ત્યારે તે ચુંબનોથી જ વ્યક્ત કરે છે. તે જ અભિવ્યક્તિ દરેક સંબંધોમાં થાય. ભીતરની હૃદયની લાગણીઓ દેહ પર વ્યક્ત થાય જ. જેમ કે ઘૃણા, ગુસ્સો, પ્રેમ, સુખ દુઃખ વગેરે ભાવો મુખથી, નેત્રોથી, અશ્રુથી, હાસ્યથી વ્યક્ત થાય છે. તેવી રીતે કોમળ લાગણી સભર ભાવ હંમેશા અધરથી, સહજતાથી વ્યક્ત થાય છે. માટે શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ સન્મુખ સાક્ષાત શ્રી ગોકુલચંદ્રમાજીના માધુર્ય રસભર્યા સ્વરૂપના જે દર્શન કર્યા ત્યારે સૌ પ્રથમ આપની દ્રષ્ટિ પ્રભુના મધુર અધર પર જ ગઈ. પ્રભુના અધરોનું વર્ણન હંમેશા લાલ બિંબાફળ જેવા સુંદર રસમય સ્વરૂપનું થાય છે. પરંતુ અહીં પ્રેમનું, મધુરતાનું દાન દેવાવાળા અધર તે મધુર કહી રહ્યા છે. તે અધરોથી માતા યશોદાજીને વાત્સલ્ય ભાવનું ઘણું જ પોષણ આપ્યું. યશોદાજીના સ્તનપાન કરતા ત્યારે યશોદાજી પુત્રના મધુર અધરોના દર્શન કરી તૃપ્ત થતા. બાળકને જોઈ પોતાના જન્મના વાત્સલ્ય ભાવનો આનંદ લેતા. શ્રી સુખદેવજી કહે છે, તે અધરોથી તે વિશ્વંભર બ્રહ્મે શુદ્ધિત થઈ શ્રી યશોદાજીના વાત્સલ્ય ભાવને પૂર્ણ રીતે પોષ્યો. ઇતિ પ્રણયબદ્ધાભિ ગોપીભિઃ કૃતરક્ષણમ પાયયિત્વા સ્તનમ માતા સંન્યવેશયદાત્મજમ. ગોપીજનોના શુદ્ધ પ્રેમથી વશ થઈને તેના પર પ્રેમ વર્ષાવતા પ્રભુએ પણ તેઓને પોતાના મધુર અધરથી અધરામૃતનું અનેક વેળા દાન કર્યું. તેથી ગોપીજનો તેના અનુભવથી પ્રભુને કહે છે, હે પ્રિયતમ, તમારા આ મધુર અધરો અને તેની સુધા દુનિયાની સંપૂર્ણ સુધાને પણ લજવી રહી છે અને તેથી જ તે સુધાના પાન માટે
ફરી તેઓ લાલાયિત રહીને પ્રભુ પાસે યાચના કરે છે, હે વીર શિરોમણી, તમારું અધરામૃત અમારી આપને મળવાની આકાંક્ષાને વધારનારું છે. તે વિરહજન્ય સમસ્ત શોક સંતાપને હરી લે છે. આ અધરામૃત અમને પાન કરાવો. સુરત વર્ધનમ શોકનાશનમ સ્વરિત વેણુનામ સોષ્ઠ ચુંબિતમ નસ્તે ધરામૃતમ. એટલે આ શ્લોકમાં એ વર્ણન આવે છે. વળી ગોપીજનો ક્યારેક કહે છે, હે દાનવીર, દિવ્ય અમૃતથી પણ મધુર તે અધરામૃતનું અમને પાન કરાવો, અમને રસ તરબોળ કરીને જીવન દાન આપો. મધુરયા ગિરા પ્યાય સ્વનઃ. એટલે અહીં પણ અધરામૃતની વાત આવે છે. પ્રભુનું આ અધરામૃત પ્રિયજનો પર છલકાતું પ્રેમરૂપી અમૃત છે. તે એટલું અલૌકિક છે કે તેનો પ્રસાદ નંદ યશોદાજીએ પણ પ્રાપ્ત કર્યો છે. પ્રભુ દુગ્ધપાન કરે, માખણ મિશ્રી જેવા રસમય પદાર્થો આરોગે, ત્યારે તેના અધરામૃતનો રસ ટપકે, ત્યારે તેઓ બાળકને વારંવાર ચુંબન કરે, ત્યારે તે દિવ્ય સુધાનો પ્રસાદ પ્રાપ્ત કરી કૃતાર્થ થતા. બાલકૃષ્ણ પલ્લામાં પોઢ્યા હોય ત્યારે બાલ ચેષ્ટાઓથી અસ્પષ્ટ વાણી બોલે, ત્યારે તેના અધરોની ચેષ્ટાઓથી જશોદાજી અને તેમના સખીઓ મુગ્ધ થઈ જતા. વનભોજન વગેરેમાં બાળ મિત્રો સાથે છાક આરોગતા તે મિત્રોને પણ પ્રભુએ પોતાના અધરામૃતથી કૃતાર્થ કર્યા. પોતાના સ્વહસ્તેથી વનના વાનર જેવા પશુ અને પક્ષીઓને પણ તે અધરામૃતનો પ્રસાદ પ્રાપ્ત કરાવ્યો. આ સર્વને પોતાની અધર સુધા વહેંચી સૌને રસમય બનાવી દેનાર તે પ્રભુના અધર મધુર છે. એટલે અહીં અધરમ મધુરમના આપણે જે શ્રવણ કર્યું તે ભાગવતજીનું અનુસંધાન લઈને કરેલું છે. અને આ સંકલન દક્ષાબેન પટેલ દત્તાણી એમના લખેલા પુસ્તકના સંકલનમાંથી લીધું છે. હવે આપણે કાલિંદી બેટીજીએ જે મધુરાષ્ટકની કથા કરી હતી એમાં આપના વચનામૃતનું જે સંકલન છે તેમાં જોઈશું. આ બધું આપ આખું શ્રવણ કરશો એટલે આપને સમજાશે કે આ એક જ સત્સંગમાં ભાગવતજી 84-252 શિક્ષાપત્ર બધાનું જ રસપાન થશે. કારણ કે ખૂબ જ સુંદર રીતે કાલિંદી બેટીજીએ પણ તેમાં વર્ણન કર્યું છે. અમે પોઈન્ટ આઉટ કરેલું છે તે આપણે સાથે લઈશું. અને 84-252 વૈષ્ણવની વાર્તાની સંગતિ પણ અહીં આપેલી છે એટલે તેનું પણ આપણે થોડુંક લીલા ચિંતન કરીશું. એટલે એક નવા જ રૂપમાં આપણે સત્સંગ કરી શકીએ. અધરમ મધુરમ. અધરામૃત એ સૌથી મધુર છે. શ્રી વલ્લભકુલના બાળકો ભોજન કરી રહે ત્યારે સૌ વૈષ્ણવો કહે કે અમારા માટે અધરામૃત રાખજો. તો સાચા અર્થમાં અધરામૃત કોને કહેવાય? અધરામૃત આપણને પ્રાપ્ત થયું છે કે શું? જો આપણે અધરામૃતનું સ્વરૂપ જાણીએ તો ચરવિત તાંબુલને અધરામૃત કહેવાય, બાકી બધું જૂઠન કહેવાય. આમ અધરામૃત અને જૂઠન બંને અલગ છે અને બંનેની સિદ્ધિ પણ અલગ છે. ધ્યાન આપજો વાલા વૈષ્ણવો. જેનું પ્રમાણ આપણને 84-252 મળી આવે છે. શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી ગુસાઈજી વૈષ્ણવોને મહાપ્રસાદ લેવડાવે છે. તે પ્રસંગમાં આપણને જાણવા મળશે કે આપશ્રીને વાલા વૈષ્ણવ કો જૂઠન કી પાતરી ધરી. ક્યારેય એવું નથી કહ્યું કે આપશ્રીને વાલા વૈષ્ણવ કો અધરામૃત કી પાતરી ધરી, કારણ કે ચરવિત તાંબુલ એ જ અધરામૃત છે. ચરવિત તાંબુલ એટલે પાનનું બીડું, ચાવેલું પાનનું બીડું. હવે કહે છે કે જૂઠન લેવાથી શું થાય અને અધરામૃત લેવાથી શું થાય? અધરામૃતનું સ્વરૂપ જેને પ્રાપ્ત થયું હોય તે પ્રથમ તો સ્નેહી બની જાય. એટલે અહીં લક્ષણો બતાવ્યા છે કે અધરામૃતની પ્રાપ્તિ થઈ હોય તો તેનું શું લક્ષણ હોય. અધરામૃતનું સ્વરૂપ જેને પ્રાપ્ત થયું હોય તે પ્રથમ તો સ્નેહી બની જાય, સદાય ભગવદ રસમાં તે છકેલા જ રહે અને અહર્નિશ પ્રિયતમની રસલીલાના ગુણ ગાયા કરે. તેનો સ્વભાવ સુંદર, સરળ અને દીનતાવાળો બની જાય છે. સ્વરૂપાસક્તિ થાય અને મૃદુભાષી અને કોમળ બની જાય. સ્વરૂપાસક્તિ બધા ઉપર નહીં પણ પોતાના ઉપર બિરાજતા સ્વરૂપ ઉપર થઈ જાય. ભાવ તો રહે જ અને અન્ય સ્વરૂપના દર્શન કરે ત્યારે પોતાની માથે બિરાજતા સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરે. જેમ કે એક સાધે સબ સધે, સબ સાધે સબ ...
એટલે એક સ્વરૂપમાં આસક્તિ રાખવાની, સદાય સત્સંગ કરવાની જ ઈચ્છા થાય. કોઈ રસિક ભગવદીય મળે તો મારા પ્યારાના ગુણગાન ગવાય એવી ઈચ્છા થયા કરે શ્રીનાથજી. કેમ કે પોતાના પ્યારાની વાતમાં કેટલો રસ પડતો હોય તે તો અનુભવ વિના અનુભવી કાજા નહીં. સ્નાનપાન શ્રી યમુનાજીમાં કરીએ પણ એ તો જાણીએ નેહ કારણ શ્રી યમને પ્રથમાય. સ્નેહ માટે તો શ્રી યમુનાજી પ્રથમ પધાર્યા છે. આ નેહ કોનો તો કહે છે હરિનાગર સો નેહ માય મેરો, હરિનાગર સો નેહ. આ સ્નેહ ફક્ત પ્રભુ માટે છે, સંસાર માટે નથી. આ છે ચરવિત તાંબુલ એટલે કે અધરામૃતની સિદ્ધિ. હવે જૂઠણની સિદ્ધિ વિશે સમજીએ તો જૂઠણ લેવાથી દ્રષ્ટિનો દોષ નિવૃત્ત થાય. એટલે જૂઠણ કેને કહેવાય કે વલ્લભકુલના બાળકો પ્રસાદ લઈ ને પછી જે પાછળ પાતળ હોય તેમાંથી આપણને જે પ્રાપ્ત થાય તેને જૂઠણ કહેવાય. કેમ કે જ્યાં સુધી દ્રષ્ટિમાં દોષ હોય ત્યાં સુધી પ્રભુના દર્શન થતા નથી. પછી ભલે ગુરુ પાસે જાય, મંદિરમાં જાય કે ભગવદીય પાસે જાય, પરંતુ જ્યાં સુધી દ્રષ્ટિ દોષવાળી હોય ત્યાં સુધી સ્વરૂપના દર્શન થતા નથી. કેમ કે નિર્ગુણનો નિર્દેશ અટપટો રસના શી પેરે કહીએ. પરંતુ જ્યારે જૂઠણના સેવનથી દોષ દ્રષ્ટિ દૂર થઈ જાય પછી આપણને પણ નિર્ગુણના દર્શન થાય. ગોપાલદાસજી કહે છે ને કે સગુણ સ્નેહી શામળા વાલા અહર્નિશ દર્શન આપોજી. આપની સાથે હસે, ખેલે, વાતો કરે એવા દર્શન આપો. મંદિરમાં તો મર્યાદા પુષ્ટિ જ છે. બીજું કે હૃદય નિર્મળ બને. કમળ જેમ કાદવમાં રહીને પણ દૂષિત થતું નથી, તેમ જૂઠણ લેવાથી સંસારરૂપી કાદવ નિર્મળ હૃદયને સ્પર્શ કરી શકતો નથી. હૃદયમાંથી ક્રોધ, મોહ, લોભ જેવા દૂષણો નિવૃત્ત થાય છે અને હૃદય નિર્મળ અને દ્રઢ બને છે. તેથી અન્યાશ્રય જાય. આમ જૂઠણ અધરામૃતની સિદ્ધિને પાત્ર બનાવે છે. આમ જૂઠણથી પાત્રતા અને અધરામૃતની પ્રાપ્તિથી પ્રભુમાં પ્રેમ થાય છે. હવે આપણે વાર્તા સંગતિ જોઈશું. એટલે અધરમ મધુરમ એટલે પ્રભુનું અધરામૃત મધુર છે. તો 84,252 વૈષ્ણવોની વાર્તામાં કોને કોને આ અધરામૃત એટલે કે ચરવિત તાંબુલ પ્રાપ્ત થયું છે તેનું અનુસંધાન લઈશું. સૌ પ્રથમ તો શ્રી ગુસાઈજીને ચરવિત તાંબુલ પ્રાપ્ત થયું હતું અને શ્રી ગુસાઈજી દ્વારા શ્રી કલ્યાણરાયજીને ચરવિત તાંબુલ પ્રાપ્ત થયું હતું. અને એ ચરવિત તાંબુલના પ્રભાવે શ્રી કલ્યાણરાયજીને ત્યાં શ્રી હરિરાય પ્રભુ ચરણનું પ્રાકટ્ય થયું હતું. એટલે આ ચરવિત તાંબુલનો પ્રભાવ કેવો છે તે આપણને સમજાશે. હમણાં આપણે નામરત્નાખ્ય સ્તોત્રનું રસપાન કર્યું હતું. તેમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ રઘુનાથજીને ચરવિત તાંબુલ આપ્યું હતું અને એના પ્રભાવે આપના હૃદયમાંથી નામરત્નાખ્ય સ્તોત્ર પ્રકટ થયું હતું. તેનું ભાવ દર્શન આપણે હમણાં કર્યું હતું. હવે 84 વૈષ્ણવની વાર્તામાં કોંભનદાસજીને ચરવિત તાંબુલ પ્રાપ્ત થયું છે. પહેલા આપણે એ વાર્તાના નામ જોઈ લઈએ, પછી થોડું થોડું રસ દર્શન કરીશું. 252 વૈષ્ણવ વાર્તામાં 11મી વાર્તા ગોપાલદાસ રૂપપુરાના. તેમાં શ્રી ગુસાઈજી દ્વારા ગોપાલદાસજીને ચરવિત તાંબુલ પ્રાપ્ત થયું અને એના પ્રભાવે આપના મુખેથી વલ્લભાખ્યાન પ્રગટ થયા. એટલે ગોપાલદાસજીના હૃદયમાં બિરાજીને શ્રી ગુસાઈજીએ આ વલ્લભાખ્યાન પ્રગટ કર્યા. એટલે આ ચરવિત તાંબુલનો પ્રભાવ. પછી 252 વૈષ્ણવ વાર્તા 33મી ગોવિંદાસ ખવાસ. આ પણ આપણે જાણીએ છીએ કે ગોવિંદાસ ખવાસને ચરવિત તાંબુલ પ્રાપ્ત થયું. એના પ્રભાવે આપે શ્રી મહાપ્રભુજીના સર્વોત્તમ સૂત્રમાં જે 108 નામો દર્શાવ્યા છે, 108 નામાવલી જે શ્રી ગુસાઈજીએ પ્રગટ કરી છે, એની સંગતિના 108 પદોની રચના ગોવિંદાસ ખવાસે કરી છે. એટલે ચરવિત તાંબુલના પ્રભાવે. ત્યારબાદ છે 252 વૈષ્ણવ વાર્તા 137મી ઋષિકેશ ક્ષત્રિય આગ્રાના, જેને અબલક ઘોડો શ્રી ગુસાઈજીને ભેટ કર્યો હતો. એટલે ગુસાઈજીના હૃદયમાં જે ભાવ હોય તે ઋષિકેશ એમનેમ જાણી જતા. ત્યારબાદ છે 252 વૈષ્ણવ વાર્તા 209મી કિશોરીબાઈ. કિશોરીબાઈને પણ ગુસાઈજી દ્વારા અધરામૃત પ્રાપ્ત થયું હતું, ચરવિત તાંબુલ પ્રાપ્ત થયું હતું અને તેના પ્રભાવે કિશોરીબાઈને રાસલીલાના દર્શન થયા હતા અને એ રાસલીલામાં
પોતાનું પણ એક સ્વરૂપ તેને જોયું હતું. એ ચરવિત તાંબુલનો પ્રભાવ. ત્યારબાદ છે 252 વૈષ્ણવ વાર્તા 223મી, એક શેઠની દીકરી જેણે મદન મોહનજી કર્યા. આ વાર્તા પણ આપણે જાણીએ છીએ કે નાનપણથી આ શેઠની દીકરી ઠાકોરજીની સેવા કરતી અને શ્રી ગુસાઈજી તેને મદન મોહનજીનું સ્વરૂપ પધરાવી આપ્યું હતું. ત્યારે આ શેઠની દીકરીએ પૂછ્યું હતું કે શું ઠાકોરજી આવા જ હોય? એ પ્રસંગ છે અહીં. અને ત્યારબાદ છે 252 વૈષ્ણવ વાર્તા 250મી, ચતુર્બુદ્ધદાસજી. ચતુર્બુદ્ધદાસજીને પણ શ્રી ગુસાઈજી દ્વારા ચરવિત તાંબુલ પ્રાપ્ત થયું હતું અને ઠાકોરજીના એ સખા પણ છે. હવે આપણે આ વાર્તાઓનું થોડુંક વિસ્તારથી ચિંતન કરીએ. વાલા વૈષ્ણવો, આપણે આ વાર્તાઓનું અનુસંધાન વિસ્તારપૂર્વક લઈએ તે પહેલા શિક્ષાપત્રનું થોડુંક રસપાન કરી લઈએ કે જેમાં પણ આ અધરામૃતની જ વાત છે. બીજા શિક્ષાપત્રમાં આવે છે કે चिबुक के मध्य में शोभित हीरा को भूषण है, अंजन युक्त नेत्र है और नेत्र प्रांत के पास शोभित मशी के बिंदु ते सुशोभित है. એટલે ઠાકોરજીના સ્વરૂપનું વર્ણન કરી રહ્યા છે. તેમાં કહે છે કે સુંદર चिबुक पर हीरा को भूषण सोहत है, सो परम उज्जवल श्री चंद्रावली जी को भाव है. ताको मधुराष्टक की टीका में विस्तार से वर्णन है. सो श्री स्वामिनी जी अधरामृत को पान करत रस के आधिक्य ते मुख कमल ते अधर रस स्रवत है. सो चिबुक पर आवत है. सो श्री चंद्रावली जी आस्वादन करत है. या भावती चिबुक भूषण विराजत है. नयन कमल में अंजन श्रृंगार रस ही होत है. सो नयन के कटाक्ष 10 दिशा के भक्तन के ऊपर परत है. ता करी ब्रज भक्त मोहित होय के अपनो गृह कार्य भूली जात है. कहे ते जो नेत्र अति कुटिल है, अति चपल है, अति अरुण गुणाईमान है, अनेक भाव सो भरे हैं. सो श्री गुसाई जी ललित त्रिभंग ग्रंथ में वर्णन किए हैं. 10 दिशा के भक्तन को नेत्र ही द्वारा रसपान करावत है और यशोदा जी मणिबिंदु का भ्रू पर दिए हैं. जो मेरे पुत्र को काहू की दृष्टि न लगे तामिशी का बिंदु का परम सोहत है, सबके मन को हरत है. એટલે ચંદ્રાવલીજી છે એ ઠાકોરજીની અધર સુધા રસનું પાન કરી રહ્યા છે. આપણે ઠાકોરજીને નકવેસર ધરાવીએ છીએ તે પણ ઠાકોરજીની અધર સુધાનું પાન કરી રહ્યા છે. નકવેસરમાં પોપટ જેવો શેપ હોય છે એટલે શુકદેવજીના ભાવથી શુકના ભાવથી છે એવી રીતે વર્ણન પણ આવે છે. એટલે અધરામૃતની વાત કરી રહ્યા છીએ. હજી અધરામૃત કેવી રીતે નંદ યશોદાજીને પ્રાપ્ત થયું અને બીજા ચરણારવિંદમાં જે ભક્તો છે તેમને પ્રાપ્ત થયું એનું વર્ણન છે. એટલે છે અધરામૃતનો જ, એટલે આપણે સાથે લઈશું. કહે છે કે લાર के मिशते अधर रस को स्रवत करनो ताकरी ज्ञान करवे वारे और बाल्य भावते अति सुलभ रस को जतावे में तत्पर है. आरक्त अधर ते रस स्रवत है. सो यशोदा जी यह जानत है. जो बालक के लार स्रवत है सो यशोदा जी मुख चुम्बन करत है. तब बाल लीला के अधर रस को आस्वाद होत है. कहे ते जो पुष्टि लीला में अधर रस पान बिना अंगीकार न होय और श्री ठाकुर जी तो नित्य लीला में सबको अंगीकार कराने के लिए पधारे हैं. तब श्री यशोदा जी को, वृद्ध गोपी जन को तथा श्री नंदराय जी को अधरामृत कैसे प्राप्त हो ताते बाल भावते लार जरत है. सखान को ग्वाल मंडली में झूठो खवावत है. ब्रज भक्तन को क्षण क्षण में अधरामृत करी जीवन है. वेणु द्वारा अधर रस्ते पशु पक्षी सबन की बुद्धि ठिकाने रहत है. अन्य संबंध नहीं होत है. बाल्य भाव में श्री स्वामिनी जी को अधरामृत पान बहुत सुलभ है. कहे ते जो श्री यशोदा जी सो कही के श्री ठाकुर जी को पधराई के ले जात है. जो तुम्हारे पुत्र को खिलाई लावे तब सब कोई यह जानत है. जो बालक को खिलावन ले जात है काहू को विषय बुद्धि नहीं होत है. एकांत में ले जाए गुप्त रस की रीति सो प्रार्थना करत है. सो श्री ठाकुर जी तो सदा रसदान में तत्पर है. या ते सकल भक्तन के मनोरथ सिद्धि अपने अंगुष्ठ प्रवेश करत है. भक्ति में प्रविष्ट ऐसे जीव की गति और क्रिया शक्ति को जतावत है. श्री ठाकुर जी सुंदर पालने में पोढ़े हैं. अपने अंगुष्ठ को बारंबार मुख में प्रवेश करत है. चरण कमल के अंगुष्ठ
दो श्रीहस्त सो पकड़ी के अपने मुख में प्रवेश करत है। ताकर यह जतावत है जो चरणारविंद में कोटि न कोटि भक्तन के मन लागे रहे हैं। तीन भक्तन के मन में यह ताप अनेक काल सो रहत है जो हमको अधरामृत को पान कबहू न भयो। वह रस कौन भांति को है सो भक्तन की आरती प्रभु सही नहीं सकत है। ताते बाल भाव सो कोई जाने नहीं या भांति चरणारविंद के भक्तन को अधरामृत रस को पान करावत है श्रीनाथ जी। अथवा प्रभु यह विचार करत है जो मेरे चरणारविंद में ऐसो कहा रस है जो सगरे भक्त चरणारविंद को पूजत है, ध्यान धरत है, सो रस में मैं हूँ तो देखो। सो बाल भाव सो आपहु चरणारविंद के रस को आस्वादन करत है और व्रज भक्तन चारों ओर वेष्टित हो रहे हैं। तिनको प्रभु नेत्रन के कटाक्ष सो आगत स्वागत करत है और रस संकेत जतावत है। अथवा कबहु श्री हस्त को अंगुष्ठ मुख में मेलत है। ताकरी अंतर्गृहगता देह छोड़ी श्री ठाकुर जी के पास आई है। तिनको आप श्री हस्त सो पकड़ अपने मुखारविंद में धारण करत है। सो कबहु एकांत में उन भक्तन को बाहर निकासी रमण करी पाछे फेरी मुखारविंद में धरी लेते हैं। लोगन के दिखाई में बालक अंगुष्ठ चूसत है। श्री स्वामिनी जी आदि को अनेक रमण बंद आदि क्रिया को बोधन करत है। या भांति श्री ठाकुर जी चाको जैसो भाईमान है। यह कमल पत्र श्री स्वामिनी जी के मनोरथ को है। कहे ते जो कमल पत्र जब ब्याह होत है तब ही धरत है। सो श्री स्वामिनी जी अपनो मनोरथ करत है। अपने श्रीअंग के वर्ण रूप के सरसो कमल पत्र दो कपोल में संवारी यह जताए जो हम ही ते ब्याह हुए गो। अथवा श्री यशोदा जी श्री ठाकुर जी को श्री स्वामिनी जी की गोद में पधराए आप गृह कार्य करत है। तब श्री स्वामिनी जी एकांत ठोर में पधराई के श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करत है जो हमारो चिरकाल को विरह कब दूरी करोगे। तब श्री ठाकुर जी किशोर वय को अंगीकार करी श्री स्वामिनी जी के सगरे मनोरथ पूर्ण करत है। तब श्री स्वामिनी जी दो कपोल पर कमल पत्र अपने हस्त सो संवारी के विवाह को मनोरथ पूर्ण करत है। जो नित्य यही भांति हमको सुख दियो करो, दीन दुल है मेरो कुंवर कन्हैया। या पद के अनुसार अनेक लीला गोप्य करी पाछे श्री ठाकुर जी को गोद में ले श्री स्वामिनी जी यशोदा जी पास आई के कहत है जो यह तुम्हारो पुत्र अति चंचल कैसे हो रहत नहीं, सो क्यों हूँ राखे हैं। एक ठोर तो यही को मन लागत नहीं, ताते खिलाई लाए हैं। तब यशोदा जी श्री स्वामिनी जी ऊपर प्रसन्न होए श्री ठाकुर जी को अपने उत्संग में लेते हैं। विधना सोअंचल पसारी यह प्रार्थना करत है जो विश्वान कुमारी ते मेरो पितरों को विवाह होए यही मैं मांगती हूँ। पाछे मेवा मिठाई सो श्री स्वामिनी जी की गोद भरी देत है। यह भांति श्री ठाकुर जी के कपोल चित्रित है और दो श्रुति जो कर्ण तामे कुंडल शोभायमान है। सो कुंडल अति चंचल है। सो कबहु मकराकृति कुंडल धरत है, कबहु मयूराकृति कुंडल है। तामे मकराकृति में स्वकीय भक्त के मनोरथ और मयूराकृति में परकीय सामे भक्त ठाड़े हैं। तिनकी कांति गंड स्थल पर झलकत है। सो कोटि कंदर्प की छवि को हरत है। नीलमणि की कांति लजावत है। એટલે અહીં શ્રી સ્વામિનીજી જ્યારે ઠાકોરજીને વનમાં પધરાવી જાય છે પછી સંકેત દ્વારા પોતાનો મનોરથ કહે છે। આપણો પુષ્ટિમાર્ગ ભાવભાવનાનો માર્ગ છે એટલે શ્રી સ્વામિનીજી પાનના બીડા આરોગાવે છે ત્યારે ઠાકોરજી પોતાનો કિશોર વય ધારણ કરી લે છે તે આપણે જોયું। એટલે સ્વામિનીજી પાનના બીડા આરોગાવતા જાય છે અને ઠાકોરજી આરોગતા જાય છે। ત્યાં સ્વામિનીજી આરોગાવ્યા કરે છે અને ઠાકોરજી આરોગે છે। ત્યાં શ્રી સ્વામિનીજીને એટલે કે રાધાજીને સુધી આવે છે કે અરે મોડું થઈ ગયું છે, યશોદાજી ખીજાશે તો। એટલે શ્રી સ્વામિનીજી દોડીને ઘરે જવાનું કરે છે। એટલે બીડા આરોગાવતા હતા એટલે મુખમાં બીડા છે, ઠાકોરજીના મુખારબિંદમાં બીડા છે અને ઠાકોરજી કિશોર સ્વરૂપમાંથી બાલવયનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે। એટલે બીડા તો એમનામ જ હજી હતા એટલે એક બાજુ બીડા વધારે ભરેલા હોવાના કારણે ગાલ મોટો છે। અને શ્રી યશોદાજી પૂછે છે અરે લાલા આ શું કર્યું? ત્યારે ઠાકોરજી કહે છે કે રાધાજી બીડા આરોગાવતા હતા તો મેં આરોગ્યા।
એટલે યશોદાજીને વાત્સલ્ય ભાવ હોવાના કારણે મુખચુંબન કરે છે અને કહે છે કે અરે મારો લાલો તો સાવ ભોળો છે, કેવો મુગ્ધ છે, ના પણ કહેતો નથી કે મારા મુખમાં આટલા બધા બીડા છે. આ રીતે પ્રભુ બધાને અધરામૃતનું પાન કરાવે છે. એ આ શિક્ષાપત્રમાં આપણે જોયું. એટલે શ્રીનાથજીનો એક ગાલ મોટો છે. આપના દ્વારા જાઓ અને નિરખીને દર્શન કરશો તો આપણને એક સાઈડનો ગાલ પીચકેલો અને એક સાઈડનો ગાલ મોટો દેખાશે. લગાવથી સેટિંગ કરવામાં આવે છે, છતાં પણ આપણે નિરખીને દર્શન કરીએ તો આપણને દેખાઈ જશે. વાલા વૈષ્ણવો, 84 વૈષ્ણવની વાર્તાના સેવક એટલે 84 વૈષ્ણવમાંના કુંભનદાસજીને પણ ચરબી તાંબુલ પ્રાપ્ત થયું હતું. તે પણ એમને પણ શ્રી ગુસાઈજી દ્વારા પ્રાપ્ત થયું હતું. એ ચતુર્ભુજદાસજીની વાર્તામાં આવશે. એટલે હવે આપણે 252 વૈષ્ણવ વાર્તા 11મી ગોપાલદાસ રૂપપુરાના એમને શ્રી ગુસાઈજી દ્વારા અધરામૃત કઈ રીતે પ્રાપ્ત થયું અને શું પ્રભાવ તે આપણે જોઈએ. અહીં જે લીલામાં નામ આપ્યું હોય તેવા ગુણ પ્રગટ થાય, એટલે ખાસ ધ્યાન દઈને સાંભળજો કે अब श्री गुसाई जी के सेवक गोपाल दास भाईला कोठारी के जमाई सोवे रूपपुरा में रहते. जिनकी वार्ता को भाव कहत है. આપણે આખી વાર્તા નહીં લઈએ પરંતુ અધરામૃતનો લઈશું. भाव प्रकाश. ये गोपाल दास सात्विक भक्त है. लीला में इनको नाम सारंगी है. ये चंपक लता ते प्रकटी है ताके इनके भाव रूप है. और सारंगी की एक अंतरंग सखी है ताको गोपाल दास रूपपुरा के नाम गोमती है. सो यहाँ गोपाल दास की स्त्री गोमती भई. ये गोपाल दास रूपपुरा में एक बनिया के यहाँ जन्मे और गोमती असारवा में भाईला कोठारी के यहाँ जन्मे. सो गोपाल दास जन्म थी सो मूंगे, कछु बोले नहीं. सो कहे थे जो ये पहले जन्म में नरसिंह मेहता हते. सो उन प्रभुन को अनेक भांति बिनती करी के श्रम करवायो है. ता अपराध ते ये मूंगे भय. पाछे ये बरस 5 के भय तब भाईला कोठारी की बेटी गोमती सो इनकी सगाई भई. वार्ता प्रसंग 1. सोवे गोपाल दास भाईला कोठारी के जमाई हते. सो प्रथम जब श्री गुसाई जी भाईला कोठारी के घर पधारे तब कोठारी ने सगरे कुटुंब को नाम निवेदन कराई, दंडवत कराई. पाछे जब गोपाल दास को नाम निवेदन कराई, दंडवत करावन लागे तब श्री गुसाई जी पूछे जो कोठारी यह कौन है. ता समय गोपाल दास बरस 9 के हते. तब कोठारी ने श्री गुसाई जी से विनती करी जो महाराज यह गोमती कोवर है. तब श्री गुसाई जी कोठारी सो हंसी के कहे जो गोमती कोवर तो सागर है, सो यह बालक तो शुद्ध मुक्त है. तासो जोड़ा कैसे बने. तब कोठारी ने फिर श्री गुसाई जी से विनती करी जो राज यह आपकी कृपा से सागर हो जाएगो. तब श्री गुसाई जी ने भाईला कोठारी को जमाई जानी अपनी गोदी में बैठाई. आप कृपा करी के अपनो अधरामृत, ध्यान आपजो, अपनो अधरामृत गोपाल दास के मुख में दिए. એટલે પાનનું બીડું ગોપાલદાસજીના મુખમાં મૂક્યું. સો ઉગાર લેત હી એટલે અધરામૃતને ઉગાર પણ કહેવાય. સો ઉગાર લેત હી गोपालदास की अति उज्जवल बुद्धि हो गई. तब गोपालदास श्री गुसाई जी को दंडवत करी के श्री वल्लभाख्यान को आरंभ करे. सो कारिका. वंदो श्री विठ्ठल वर सुंदर नवघन श्याम तमाल. यह कड़वा संपूर्ण गोपालदास ने श्री गुसाई जी के आगे गाई सुनायो. तब श्री गुसाई जी और भाईला कोठारी सुनी के बहुत प्रसन्न भय. पाछे श्री गुसाई जी गोपालदास को यह आज्ञा कर जो गोपालदास श्री आचार्य जी को गुणगान करो. तब गोपालदास फिर श्री गुसाई जी को दंडवत करे दूसरो आख्यान को गान करे. ताकी कारिका. लक्ष्मण सुत श्री वल्लभराय जी स्मरण करता दुष्कृत जाय जी. यह आख्यान गोपालदास श्री गुसाई जी के आगे गाए. तब श्री गुसाई जी कहे जो यह अब गोमती कोवर सागर भयो. यह आशीर्वाद श्री गुसाई जी गोपालदास को दिए. पाछे 7 आख्यान हो गोपालदास किए. भाव प्रकाश. सो या वार्ता में श्री गुसाई जी आपो अपने भक्तन को उत्कर्ष जताए जो भाईला कोठारी द्वारा श्री गुसाई जी आप गोपालदास को सागर होन की कहे. सो बानी तत्काल फलित भई. ताते गोपालदास
आगे गाय हैं जो भक्त जन पद रज प्रतापे सकल सरिया काज। આપણે હમણાં વલ્લભાખ્યાનનું પારાયણ કર્યું તેમાં આ બધું આવ્યું હતું. હવે આપણે બીજી વાર્તા જોઈએ તો 252 વૈષ્ણવ વાર્તા 33મી ગોવિંદાસ ખવાસ. વાલા વૈષ્ણવો, આપણા ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે ને કે અન્ન એવો ઓટકાર. એટલે ચરબી તાંબુલ આ અધરામોટ પેટમાં જાય છે તો તે કંઈક તો બોલે જ છે, કંઈક તો સાનુભવ જતાવે છે, કંઈક વધુ પ્રાપ્ત થાય છે. તો ચાલો જોઈએ ગોવિંદાસ ખવાસની વાર્તામાં ચરબી તાંબુલનો શું પ્રભાવ છે. अब श्री गोसाई जी के सेवक गोविंदास खवास सन्याढ़ ब्राह्मण मथुरा में रहते. तिनकी वार्ता को भाव कहत है. ये तामस भक्त है, लीला में इनको नाम नृत्य कला है. सो नृत्य कला मनसुखा गोप की छोटी बेटी है, ताते इनके भाव रूप है. ये नृत्य में बहुत प्रवीण है. याते श्री चंद्रावली जी को अति प्रिय है. ये चंद्रावली जी के युद्ध की है. અહીં ધ્યાન આપવાનું છે કે લીલામાં ગોવિંદાસ ખવાસનું નામ નૃત્ય કલા છે અને પ્રભુ અહીં આ વાર્તા જોશો એટલે સમજાશે કે નૃત્યથી રીઝે છે, એટલે એનું નામ છે. એવા ગુણ પ્રગટ થયા અને શ્રી ચંદ્રાવલીજીને તે એટલે જ પ્રિય છે કારણ કે તે નૃત્ય બહુ સુંદર કરે છે અને પ્રભુ તેના પર પ્રસન્ન છે. હવે આગળ કહે છે, ये गोविंदास मथुरा में एक सनाढ़ ब्राह्मण के जन्मे, सो वे बड़े भय बरस 20-25 के. तब इनको राग रंग को इसक लगियो. सो वेश्या भवयान के संग रहे, नाच तमाशो देखियो करे. सो कछुक दिन में गोविंदास नृत्य करवो सीखे, संग करी और गान हूँ करन लागे. पाछे गोविंदास नृत्य ऐसो करते जो सबको इनको नृत्य देखी मोहित वही जाते. सो गोविंदास बड़े प्रसिद्ध भये. ता पाछे एक समय श्री गुसाई जी मथुरा पधारे. तब कहूँ ने गोविंदास ने कहियो, जो श्री गुसाई जी यहाँ पधारे हैं अमुक ठौर बिराजते हैं. सो उनको नृत्य संगीत बहुत प्रिय है. यह बात सुनी के गोविंदास श्री गुसाई जी के दर्शन को आए. सो दर्शन करत थकित वही गए એટલે આશ્ચર્યમાં પામ્યા. પાછે શ્રી ગુસાઈજી गोविंदास को सावधान किए और आज्ञा किए, जो गोविंदास तुम अपना नृत्य श्री नवनीत प्रिया जी को दिखाओ. ताही समय श्री नवनीत प्रिया जी के श्रृंगार के दर्शन खुले. सो गोविंदास श्री नवनीत प्रिया जी के सन्मुख नृत्य करन लागे. सो नृत्य करत करत गोविंदास रस में तदाकार हो गई. वह समये श्री नवनीत प्रिया जी ने वो गोविंदास को अलौकिक रीति सो दर्शन दिए. सो दर्शन होते ही मूर्छित वह गई. पाछे टेरा खींचियो. तब श्री गुसाई जी गोविंदास को टेरी के कहे, जो गोविंदास उठो, तुमको श्री नवनीत प्रिया जी के सदैव ऐसे ही दर्शन होंगे. तब गोविंदास ठाड़े भय. पाछे श्री गुसाई जी सो विनती किए, जो महाराज मुख कृपा करी शरण लीजिए, सदैव आपके चरण में राखिए. तब श्री गुसाई जी कृपा करी गोविंदास को नाम निवेदन कराए. ता पाछे चरबित तांबूल दिए. ध्यान आपजो, गोविंदास को नाम निवेदन कराए ता पाछे चरबित तांबूल दिए. सो लेत ही श्री गोविंदास को श्री आचार्य जी श्री गुसाई जी के स्वरूप को ज्ञान भयो. तब गोविंदास श्री आचार्य जी के पद करन लागे. सो सुनी के श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न भये. पाछे गोविंदास को श्री गुसाई जी कृपा करी अपनी खवासी दिए. એટલે ખવાસ તેને કહેવાય કે જે ભીતરનો ભેદ જાણે. ખવાસ હોય તે વલ્લભકુલના બાળકોના ઘરમાં ભીતરમાં પ્રવેશ કરી શકતા હોય, એટલે જે ભીતરનો ભેદ જાણે તેને ખવાસ કહેવાય. એવું મેં કાલિંદી બેટીજીના વચનામૃતમાં સાંભળ્યું હતું. એટલે અહીં ચરવિત તાંબુલ શ્રી ગુસાઈજીએ કૃપા કરીને આપ્યું. એટલે આ ચરવિત તાંબુલ બોલ્યું. શું બોલ્યું? તો શ્રી મહાપ્રભુજીના 108 પદના રૂપમાં પ્રકટ થયું. એટલે ચરવિત તાંબુલ પ્રાપ્ત થવાથી ગોવિંદાસ ખવાસને શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી ગુસાઈજીના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયું અને પદોની રચના કરી. એટલે શ્રી ગુસાઈજી સ્વયં ચરવિત તાંબુલના સ્વરૂપમાં પધારી એમના હૃદયમાં બિરાજી અને આ પદોની રચના કરી છે. અને એક પ્રસંગ પણ આવે છે ને કે ये गोविंदास श्री गुसाई जी की खवासी करते और श्री गुसाई जी नवनीत प्रिया जी को सेवा श्रृंगार करे
तब यह गोविंदास घुंघरू बांधी के श्री नवनीत प्रिया जी के आगे नृत्य करे। सो एक समय श्री राधाष्टमी के दिन राजभोग ते पहुंची के श्री गुसाई जी सगरे बालकन सहित रावल पधारे। यहाँ श्री शोभा बेटी जी ने श्री नवनीत प्रिया जी को उत्थापन की जारी भरी। पाछे भोग समय गोविंदास नृत्य श्री नवनीत प्रिया जी के आगे करन लागे। रस में तदाकार भय। सो एक पग के घुंघरू टूटियो। तब श्री नवनीत प्रिया जी ने अपने चरण के नुपुर गोविंदास को पहराई। सो सुधी गोविंदास को कछु नहीं। पाछे घरी चारी रात्रि गई। तब श्री गुसाई जी सब बालकन सहित रावल ते श्री गोकुल आई। तो सुने जो श्री नवनीत प्रिया जी के भोग को समय है। तब श्री गुसाई जी मंदिर में आए, कछु कहन लागे। तब श्री नवनीत प्रिया जी ने श्री गुसाई जी से कहियो, એટલે ઈશારાથી કહ્યું આમ, જો तुम बोलो मती। पाछे अर्धरात्रि समय नृत्य रहियो। तब शोभा बेटी को सुधी आई। तब संध्या भोग सेन भोग इकठो धरी। समय भय भोग सराय। सेन आरती करी के शोभा बेटी जी श्री नवनीत प्रिया जी को सेन कराए। वे गोविंदास खवास श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। सो सदैव समय के समय श्री नवनीत प्रिया जी के सन्निधान नृत्य करते। सदा प्रेम ते रसमत भरे रहते। बड़े ही कृपा पात्र हते। ताते उनकी वार्ता को पार नहीं। सो इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। એટલે આપણી કલાનો વિનિયોગ પ્રભુમાં કરવો જોઈએ એ અહીં આપણે સમજી શકીએ છીએ। આપણામાં જે આવડત હોય તે પ્રભુમાં વિનિયોગ કરવી જોઈએ। આ રીતે ગોવિંદાસ ખવાસ પર કૃપા કરી અને ચરવિત તાંબુલ શ્રી ગુસાઈજીએ આપ્યું। વાલા વૈષ્ણવો, આપણે વાર્તા વાંચતા હોઈએ છીએ, પરંતુ આટલું ઝીણવટપૂર્વક નથી વાંચતા હોતા કે જેના કારણે આપણને ધ્યાન પડે। હવે ત્યારબાદ વાર્તા સંગતિ છે, એટલે આપણે અધરામૃતની વાર્તા સંગતિ લઈ રહ્યા છીએ, અધરમ મધુરમની। હવે તેમાં વાર્તા સંગતિ છે 252 વૈષ્ણવ વાર્તા 110મી। એક બ્રાહ્મણી છાણાવાડીમાં તો ચરણામૃતનું આવે છે। 252 વૈષ્ણવ વાર્તા 137મી। ઋષિકેશ ક્ષત્રિય આગ્રાના વાર્તા 137મી। ઋષિકેશ ક્ષત્રિય આગ્રાના આ મબલક ઘોડાવાળા કે ગુસાઈજીએ મનમાં મનોરથ કર્યો કે એક અબલક ઘોડો હોય તો नवनीत प्रिया जी थी श्रीनाथ जी जवानो सरल के सेवक ऋषिकेश क्षत्रिय आगरा में रहते। तिनकी वार्ता को भाव कहत है। ये राजस भक्त है। लीला में इनको नाम मन आतुरी है। श्रीनाथ जी ये सुमंदिर आते प्रगटी है। ताते उनके भाव स्वरूप है श्रीनाथ जी। ये आगरा में एक क्षत्रिय के जन्मे। सो बरस 20 के भये। तब इनको विवाह कियो। पाछे कछुक दिन में माता पिता मरे। तब ऋषिकेश घोड़ान की दलाली करन लागे। सो व्यवहार काज में ऋषिकेश को रूपचंद नंदा को मिला पयो। सो ये रूपचंद नंदा के घर नित्य जाते। सो एक समय घरी दिन चढ़े श्री गुसाई जी आगरा पधारे। तब रूपचंद नंदा के घर विराजे। सो ता समय ऋषिकेश रूपचंद नंदा के घर कछु व्यवहार काज को आए होते। सो इनको श्री गुसाई जी के दर्शन भय। सो ऋषिकेश 2 हाथ जोड़ी के ठाड़े रहे। श्री गुसाई जी ऋषिकेश की ओर देखे। पाछे ऋषिकेश को आज्ञा किए, जो ऋषिकेश अब कहाँ विलंब है। तभी ऋषिकेश को श्री गुसाई जी आप साक्षात श्री मदन मोहन जी के स्वरूप से दर्शन दिए। श्रीनाथ जी बोलो श्री मदन मोहन प्यारे की जय। सो ऋषिकेश मूर्छित हो गए। वह स्वरूप हृदय में धारण कर न सके। सो घड़ी भर मूर्छा रही। पाछे जागे। तब ऋषिकेश श्री गुसाई जी से विनती कर किए, जो महाराज बेगी अंगीकार कीजिए, अब विलंब सहयो जात नहीं, कारण के नाम मन आतुरी छे। तब श्री गुसाई जी ऋषिकेश को नाम सुनाए और कहे, जो अब कहाँ समाचार है। तब ऋषिकेश ने कही, जो महाराज 4 स्वरूप से आप दर्शन दिए, उनकी सेवा करूं ऐसी इच्छा है। तब श्री गुसाई जी ऋषिकेश को कहे, जा नाई ले, हम ताको सेवा पधराई देंगे। तब रूपचंद नंदा पास ठाडे हते। उन कहियो, जो चलो हूँ नहाई देत हूँ। पाछे ऋषिकेश रूपचंद नंदा के वहीं नहाई। पाछे रूपचंद नंदा ने नए वस्त्र पहरे को दिए। सो ऋषिकेश पहरी के श्री गुसाई जी के आगे ठाडे भये। तब श्री गुसाई जी को नाम निवेदन करवाए। पाछे श्री मदन मोहन जी को स्वरूप पास में होतो।
सो श्री गुसाई जी आपू ऋषिकेश में पधराई दिए, ऋषिकेश को पधराई दिए और आज्ञा किए, जो ये मेरो ही स्वरूप है, ताते इनकी निकी भांति सो सेवा करियो और रूपचंद नंदा को संग करियो। पाछे ऋषिकेश यथाशक्ति भेंट किए, ता पाछे घर जाए, स्त्री पुत्र आदि सबको ले आए। सो उनको हो श्री गुसाई जी सो विनती करी, नाम निवेदन करे। पाछे ऋषिकेश प्रीति पूर्वक श्री ठाकुर जी की सेवा करन लागे और वे नित्य रूपचंद नंदा के यहाँ भगवत वार्ता सुनवे जाते। એટલે ભગવદીઓનો સંગ કરવાનો કહ્યું અને શ્રી ગુસાઈજીએ કૃપા કરીને મદન મોહનજીના સ્વરૂપમાં દર્શન આપ્યા। પછી આ વાર્તા તો મોટી છે, પણ આપણે આ અધરામૃતનો ઉગારનું લેવું છે, એટલે ટૂંકમાં આગળનું કહી દઉં કે એને કોઈ પણ ઘોડામાં કોઈ પણ પ્રકારનો દોષ ન હોય એવો ઘોડો શ્રી ગુસાઈજીને ભેટ કર્યો અને એની પાસે પૈસા તો હતા નહીં, એટલે ऋषिकेशના મનમાં બહુ આરતી થતી કે જો એક बहुत સુંદર ઘોડા શ્રી ગુસાઈજી को भेट अवश्य करनो। એટલે મનમાં આ વિચાર કરતા હતા। એટલે આપણે આતુરતાપૂર્વક મનમાં કોઈ પણ મનોરથ કરીએ તો તે મનોરથ પ્રભુ પૂર્ણ કરે જ છે। એટલે ત્યારે એવું થયું કે એક सौदागर 2000 घोड़ा लेके आगरा में बेचन को आयो। तब यह वह सौदागर ऋषिकेश को बुलाए के कहियो, जो ये 2000 घोड़ा है सो सबको देखी के इनकी बिक्री कराई दो। तब ऋषिकेश ने सब घोड़ा को देखे आछी भांति सो। तामे एक घोड़ा अबलख रंग को बहुत सुंदर, એટલે એક પણ ખોડખાપણ ન હોય એવો અબલખ ઘોડો, તામે એક हो एब नहीं। तब ऋषिकेश ने अपने मन में विचारियो, जो यह घोड़ा श्री गुसाई जी के लायक है, परंतु मैं अब कौन प्रकार यह घोड़ा श्री गुसाई जी को भेंट करूं? मेरे घर में तो कछु द्रव्य नहीं है। पाछे ऋषिकेश ने वो सौदागर सो कहे, जो सगरे घोड़ा तुमको यहाँ बेची के दाम करी देऊंगो। એટલે આ ઋષિકેશ છે તે બધા ઘોડા વેચાવી દે છે ને આ સૌદાગર ખૂબ જ ખુશ થાય છે અને તેને કંઈક 2000 રૂપિયા આપે છે અને આ ઘોડો પણ આપે છે। એટલે ઋષિકેશ પોતે કહે છે કે આ ઘોડો તું મને દે, તારે જે પૈસા થાય આમાંથી કાપી લેજે, એવી રીતે તેમાં આવે છે। અને પછી ઠાકોરજી, હવે ध्यान આપજો, श्री प्रातःकाल भयो तब यहाँ श्री गुसाई जी नाई के श्री नवनीत प्रिया जी को जगाए। पाछे मंगला करी श्रृंगार करी पाछे गोपी वल्लभ सो पहुंची के मन में यह विचार कियो। ध्यान आपजो, श्री गुसाई जी ना मन में विचार आव्यो कि जो अबलख रंग को घोड़ा तापर मखमल की जीन होय ऐसो घोड़ा होय तो तापर चढ़ी के श्रीनाथजी द्वार जइए। એટલે અહીંયા ગુસાઈજીએ मनोरथ કર્યો, મનમાં વિચાર કર્યો અને ऋषिकेश ત્યાં આવ્યા। ऋषिकेश प्रातः मलाह को कछुक पैसा दे बेगी ही पार उतरी के श्री गुसाई जी के द्वारे आए के घोड़ा लेके ठाड़े हुए रहे। तब विष्णुदास पोरिया ने कही, जो तुम कौन हो, कहाँ ते आई हो और घोड़ा लिए द्वार के पास ठाड़े क्यों हो? तब ऋषिकेश ने विष्णुदास पोरिया सो कहियो, जो यह घोड़ा श्री गुसाई जी की भेंट है और मैं श्री गुसाई जी को सेवक हूँ। ऋषिकेश मेरो नाम है, आगरे में रहत हूँ। यह सुनी विष्णुदास श्री गुसाई जी के पास आई विनती की, जो महाराज आगरे में ऋषिकेश रहत है, सो आपको सेवक है, सो घोड़ा बहुत सुंदर भेंट ले आयो है, सो द्वार ऊपर ठाडो है। यह सुनी श्री गुसाई जी अब द्वार ऊपर पधारे। तब ऋषिकेश ने श्री गुसाई जी को दंडवत करी विनती की, जो महाराज यह घोड़ा आपो की भेंट है। यह प्रकार ऋषिकेश की विनती सुनी के घोड़ा को देखी के बहुत प्रसन्न भये श्री गुसाई जी। तब आपू श्रीमुख से आज्ञा किए, जो आजो मेरे मन में यह आई हती, जो अबलख रंग को घोड़ा और मखमल के साज की जीनता पर चढ़ी के श्रीनाथ जी द्वार चलिए, सो तू मेरे मन की जानी। એટલે મન આતુરી નામ છે અને શ્રી ગુસાઈજીના મનનું જાણી ગયા અને શ્રી ગુસાઈજીને ભેટ ધરવા માટે મન એટલું બધું આતુર હતું કે ક્યારે જલ્દી મારે આ બધી સગવડ થઈ જાય અને હું શ્રી ગુસાઈજીને આ ઘોડો ભેટ ધરું। એટલે શ્રી ગુસાઈજી પ્રસન્ન થઈને તેને કહે છે અને તેને પણ નાથ દ્વારા સાથે લઈ જાય છે। એટલે આપણે ટૂંકમાં લઈએ એટલે આ અધરામૃતનું સમજી શકાય। એટલે પછી એટલે શ્રી ગુસાઈજી તેને લઈ જાય છે 3 દિવસ સુધી અને ત્યારે ઋષિકેશ કહે છે, એટલે શ્રી ગુસાઈજીએ કહ્યું કે જો સદા શ્રીજી और શ્રી નવનીત પ્રિયા, એટલે ગુસાઈજીને ખૂબ જ તાપ થાય છે, જ્યારે નવનીત પ્રિયાજીની સેવા કરતા હોય ત્યારે શ્રીનાથજીની સુધી આવે એટલે મન આતુર થાય અને જ્યારે
શ્રીનાથજીની સેવા પહોંચતા હોય ત્યારે શ્રી નવનીત પ્રિયાજીની યાદ આવે તો એના માટે મન આતુર થાય. એટલે સંયોગ ને વિયોગ બંને જરૂરી છે. એટલે શ્રી ગુસાઈજી આવું કરે છે. એટલે ત્યારે આ ઋષિકેશ કહે છે કે મહારાજ એક સોદાગર 1000 દોઈ ઘોડા લાયો હે સો કછુક કો બિકાઈ. એટલે આ કઈ રીતે વેચ્યું એ કહ્યું. પછી ઋષિકેશને તાપ થાય છે કે આપ આવું શું કામે કરો છો, તો બંને સ્વરૂપને સાથે પધરાવો ને. કહે છે જો મહારાજ શ્રીનાથજી और श्री नवनीत प्रिया जी एक ठोर बिराजे तो आपको श्रम न हो, ऐसे धाम में पधारत हो, ऐसे गाम में पधारो. એટલે આતુરતા પૂર્વક આપને પધારવું પડે છે. सो हमको देखी के महा दुख होता है. यह सुनी के श्री गुसाई जी ऋषिकेश सो कहे जो सदा श्री जी और श्री नवनीत प्रिया जी पास बिराजे तो इतनी आरती हमको ना होए. काहे थे जब श्री नवनीत प्रिया जी के निकट हम रहते हैं तब तो श्रीनाथ जी को स्मरण होता है, तब विरह होता है. पाछे जब श्री जी द्वार जाते हैं तब श्री नवनीत प्रिया जी को स्मरण होता है. जो बालक है बेगी जायो चाहिए. या प्रकार आरती सिद्ध होता है. ताते श्री जी श्री गोवर्धन पर्वत पर सदा बिराजे, श्री नवनीत प्रिया जी श्री गोकुल में सदा बिराजे, ताही में आछो है. यह कही यह जताए जो सेवा में संयोग विप्रयोग दो भाव रखने ताते रुचि बढ़े. यह सुनी के ऋषिकेश ने श्री गुसाई जी को दंडवत करी के विनती करी जो महाराज हम तुच्छ बुद्धि हैं, ताते महाराज हम आपके भाव को कहा जाने, और आप करत हो सो तो हमारे हित के लिए ही अच्छी करत हो. या प्रकार सगरी राह श्री गुसाई जी सो भगवत वार्ता कर श्री जी द्वारा आए. तब श्री गुसाई जी तत्काल स्नान करी के उत्थापन की झारी भरी के श्रीनाथ जी के मंदिर में पधारे. श्रीनाथ जी के दर्शन करे तापा छे ऋषिकेश को दर्शन कराए. सो ऋषिकेश दर्शन करी के बहुत प्रसन्न भय. ता समय ऋषिकेश ने एक कीर्तन रागनट में गायो. परम कृपाल श्री वल्लभ नंद भक्त मनोरथ पूरन कारण भूवर आए आनंद कंद. गिरिधर लाल प्रगट दिखराए पुष्टि भक्ति रसदान किए. ऋषिकेश सिर सदा बिराजो यह जोरी सुख नयन दिए. यह कीर्तन सुनी के श्री गुसाई जी ऋषिकेश ऊपर बहुत ही प्रसन्न भये. पाछे सेन ताए पहुंची के अनुसर कराए के सेन को दूध श्री गुसाई जी आपने श्री हस्त में ले आए. सो एक मलरा में थोड़ो सो प्रसादी दूध ऋषिकेश को दिए. वाला वैष्णवो अहीं खास ध्यान आपजो के पेला जूठनी की पातरी धरी हवे श्री ठाकुर जी ने धरावेलू प्रसादी दूध मळ्યું. सो ऋषिकेश श्री गुसाई जी के बैठक में जाई के लियो. सो लेते ही देहानुसंधान भूली गई. એટલે કે પછી કે એને બધું પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે. सो बैठक ही में बैठे रहे, वही ठोर पड़ी रहे और हृदय भीतर स्वरूपानंद को अनुभव होने लाग्यो. એટલે ઠાકોરજી ને ધરાવેલું दूध प्रसादी दूध नवनीत प्रियाजी નું આપ્યું અને એને આવો અનુભવ થયો. तब वैष्णव सब डरपन लागे. जो ऋषिकेश को कहा भयो तब श्री गुसाई जी कहे जो कछु चिंता मती करो, काल ही आछो हो जाएगो, काल ही आछो हो जाएगो. तब सब वैष्णव विदा हुए कि अपने डेरा गए. पाछे जब घरी दोई रात्रि पिछली बाकी रही तब ऋषिकेश की मूर्छा बीती. सावधान भय. ता समय श्री गुसाई जी उठे. जब ऋषिकेश से पूछे जो कहा समाचार है, तब ऋषिकेश ने विनती करी जो महाराज आपकी कृपा है तहाँ सदा जागत में सोवत में सब ठोर कल्याण है. श्रीनाथ जी जागत में आपको दर्शन है, सोवत में स्वप्न में आपको दर्शन. श्रीनाथ जी और मैं कहा कहूँ मेरे सामर्थ्य कहवे को नहीं. यह सुनी के श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न भय. श्री मुख सो कहे जो वैष्णव को ऐसो ही चाहिए. या प्रकार 3 रात्रि श्री जी द्वार श्री गुसाई जी और ऋषिकेश रहे. पाछे श्री गुसाई जी श्री गोकुल वह अबलक घोड़ा पे चढ़ी के पधारे. तब ऋषिकेश संग ही श्री गोकुल आए. तहाँ श्री नवनीत प्रिया जी के उत्थापन के दर्शन ऋषिकेश ने किए. पाछे श्री गोकुल ही में रात्रि को रहे. पाछे प्रातः काल ऋषिकेश श्री गुसाई जी से विनती करी के कहियो जो महाराज मोको घर जाइवे की आज्ञा दो. तब श्री गुसाई जी आज्ञा किए. जो राजभोग आरती पाछे तो को विदाई करेंगे. तब दंडवत करे के ऋषिकेश स्नान करवे को गए. पाछे राजभोग ताई दर्शन दिए. पाछे श्री गुसाई जी अनुसर कराई के बैठक में पधारे. पाछे आपो श्री गुसाई जी सब बालकन सहित भोजन किए. ता पाछे ऋषिकेश को श्री गुसाई जी ने जुठनी की पातरी धरी. पाछे आप गादी पर बिराजे और बीरा आरोगत भय. ध्यान आपजो पेला जुठनी की पातरी धरी પછી
बीरा आरोगत भये तब ऋषिकेश महाप्रसाद लेके पाछे आए और श्री गुसाई जी को दंडवत केने पाछे विदा मांगी। तब श्री गुसाई जी ने खवास सो प्रसादी ऊपर ना मंगाए। तब ऋषिकेश ने श्री गुसाई जी से विनती करी के प्रसादी ऊपर ने की ना कही। तब श्री गुसाई जी ने कही जो तू प्रसादी ऊपर ने की नाही काहे को करावत है। तब ऋषिकेश ने विनती की है जो महाराज मोसो कछुराज की सेवा नहीं बनी है और आपके घर को खर्च अधिक करायो है। एक मनुष्य घोड़ा की चाकरी को चाहिए, दाना घास भंडार में खर्च होएगो। सो कहा करो महाराज, मेरो कछु बस नहीं, आप तो अंतर्यामी हो, सब जानत हो। એટલે અહીં ઉપરનાની ના કહી। એટલે કાલિંદી બેટીજીના વચનામૃતમાં એમ આવ્યું હતું કે ઉપરના એટલે ઉપરની ના પરંતુ ભીતરની હા। એટલે હવે ભેદ ખુલશે કે ભીતરની હા કહી તો ગુસાઈજીએ શું આપ્યું અને શું કહેવાય ઋષિકેશે કીધું કે આપ તો અંતર્યામી हो, सब जानत हो। એટલે હવે ऋषिकेश मनोरथ पूर्ण करशे। ऐसे ऋषिकेश के दैन्यता के वचन सुनी के श्री गुसाई जी बहुत ही प्रसन्न भये। पाछे खवास को ऊपर नाकी नहीं किए, पाछे ऋषिकेश को बुलाई के अपने श्री हस्त में उगारू लेके ऋषिकेश को दिए। એટલે પોતે જે ચરવી તાંબુલ આરોગી રહ્યા હતા પાનનું બીડું એ અધરામૃત પોતાના હથેળીમાં લઈ અને ઋષિકેશના હાથમાં આપ્યું। એટલે આ રીતે અધરામૃતનું દાન કર્યું કારણ કે ઉપરનાની ના કહી હતી ઋષિકેશ એટલે કે ઉપરની બાહ્યથી કે નહીં પણ તમે આંતર કૃપા કરો। એટલે ऋषिकेशને ચરવિત તાંબુલ આપ્યું। સો લેકે ऋषिकेश बहुत प्रसन्न भये। पाछे ऋषिकेश श्री गुसाई जी को दंडवत करी के अत्यंत प्रीति सो विदा भये। तब ऋषिकेश की प्रीति देखी श्री गुसाई जी को हृदय भरी आयो। जो ऐसो वैष्णव पास रहे तो अष्टप्रहर भगवत भाव में मन रहे। या प्रकार ऋषिकेश विदा होय के चले सो दूसरे दिन आग्रे जाय पहुंचे। હવે આપણે આખી વાર્તા નહીં લઈએ પરંતુ અહીં અધરામૃતનું આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કેવી કૃપા શ્રી ગુસાઈજીએ ઋષિકેશ પર કરી કે તેને ચરવિત તાંબુલ આપ્યું કારણ કે ઋષિકેશે વિનંતી કરી કે ઉપરના આપનો ખર્ચ વધારવો નથી મારે। એટલે ઉપરનાની ના કહી એટલે કે બાહ્ય કૃપા નહીં આંતર કૃપા કરો કે મારા આંતરચક્ષુ ખુલી જાય, અમારા અંતરમાં અનુભવ થાય। એટલે પ્રભુએ ગુસાઈજીએ તેને ચરવિત તાંબુલ આપ્યું। આ રીતે ચરવિત તાંબુલનો આવો પ્રભાવ છે। અધરમ મધુરમ। વાલા વૈષ્ણવો સાચું કહેજો કેટલો આનંદ આવે છે। એક અધરમ મધુરમનો આવો સુંદર ભાવ આપણે વિચાર્યો પણ ન હોય એવો સુંદર આનંદ આવે છે કારણ કે આપણે પુસ્તકો વાંચતા હોઈએ પરંતુ આટલું ડિટેલમાં નથી વાંચતા હોતા। હવે ત્યારબાદ અધરમ મધુરમમાં વાર્તા સંગતિ છે 252 વૈષ્ણવ વાર્તા 209મી કિશોરીબાઈ। अब श्री गुसाई जी की सेवकनी किशोरीबाई ब्राह्मणी गुजरात की जाको श्री यमुना जी नित्य दर्शन देते तिनकी वार्ता को भाव कहत है। सो यह किशोरीबाई गुजरात में एक ब्राह्मण के जन्मी। सो वहाँ को पिता श्री गुसाई जी को सेवक होतो। सो वहाँ के 2 बेटी हती, तामे किशोरी छोटी होती। सो इन दोनों को वाने श्री गुसाई जी की सेवकनी कराई हती। सो किशोरीबाई के ऊपर वहाँ के पिता को बहुत ममत्व होतो। सो वहाँ को नित्य श्री यमुनाष्टक को पाठ करावे, लाड लडावे, बहुत ही प्यार करे। सो किशोरी वर्ष 9 की भई तो वहाँ को ब्याह एक जाति की लड़का सो कियो। सो वह ब्याह होत ही मरियो। सो किशोरी ने लौकिक कछु जानियो नहीं। ता पाछे केतेक दिन में किशोरी को पिता हु मरियो और माता तो वाकी पहले से ही मरी चुकी हती। सो किशोरी की बहनी वाकी खबरी राखे। ऐसे करत जब किशोरी बरस 20 की भई तब वाको शीतला निकसी। सो वह किशोरीबाई की देह शीतला में रही गई। हाथ पांव सो लूली भई, कानन सो सुने नहीं, पावन सो चालियो जाए नहीं, मुख ते कछु बोलियो न जाए। सो वाने अपने पिता के मुख सो श्री यमुनाष्टक पढ़्यो हतो। सो वाको आधो श्लोक याद रह्यो हतो। सो वा किशोरीबाई 8 प्रहर वा श्लोक को पाठ करती। सो काहू को जतावती नहीं। सो ऐसे 8 प्रहर पाठ कियो करती। सो श्लोक विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी वृते कृपा जलधि संश्रिते मम मन सुखम भवय। श्रीनाथ जी
यह आधे श्लोक को पाठ करती और किशोरी बाई की एक बहन हती, सो वह किशोरी बाई को खवाए के चली जाती, परंतु अपने मन में बहुत दुख पावती। परी करे कहा और किशोरी बाई श्री यमुनाष्टक को पाठ करे और मारियम जी को ध्यान मन में करती और काहू को बोलती नहीं। सो एक दिन श्री यमुना जी मेले वस्त्र કરી પહેરી કિશોરીબાઈ की બહેની હતી તાકે ઘર પધારી। શ્રીનાથજી એક જગ્યાએ મેં સાંભળ્યું હતું કે અહીંયા કહ્યું છે કે શ્રી યમુનાજી મેલે વસ્ત્ર કરી, એટલે એ રજવાળા વસ્ત્ર તો એ કઈ રજ હતી? તો યમુના તટની રજ કે જ્યાં શ્યામ સુંદર સદા વિહાર કરે છે એ વ્રજની રજ किशोरीबाई ने प्राप्त थाय ए हेतु थी यमुना जी मेले वस्त्र करी के पधारे और कहन लगी, जो तू अपनी बहनी को रोटी खवाती है सोता ही ते तो बहुत दुख पावत है, ताते किशोरीबाई की रसोई मैं करूंगी। तब किशोरीबाई की बहन ने श्री यमुना जी से कही, जो भली बात है, मेरे मुंह मन में ऐसे ही आई है, जो कोविया की टहल करे तो मैं छूटू, ताते अब तुम ही टहल करो। सौता दिन ते श्री यमुना जी अपने श्री हस्त कमल सो रसोई करी के किशोरीबाई को खवाती। भाव प्रकाश यह कही यह जताए, जो श्री यमुनाष्टक के आधे श्लोक को पाठ जो को निरंतर करत है, ताके ऊपर श्री यमुना जी यहाँ भांति कृपा करती है, वाकी रसोई करती है, वाको अपने श्री हस्त सो खवाती है। तो जो को सग्र यमुनाष्टक को पाठ निरंतर प्रीतिपूर्वक करे, ताके भाग्य की तो कहा कहिए। श्रीनाथ जी ताते वैष्णव को श्री यमुनाष्टक को पाठ हरनिश करना, ताते श्री यमुना जी को स्वरूप हृदयारूढ़ होय, परम सौभाग्य को पावे। तब किशोरीबाई को श्लोक उद्बोध भयो और यह श्लोक को भावार्थ हृदयारूढ़ भयो और अपने मन में बहुत ही प्रसन्न होने लगी। यहाँ में जताए कि श्री किशोरीबाई जी को यमुना जी की कृपा ते लीला ऐश्वर्य स्फुर्यो, तब चित्त में प्रसन्नता भई, लौकिक क्लेश बाधा न कियो। श्रीनाथ जी तब कितने दिन श्री गुसाई जी आपुआ गाम में पधारे, तब वह गाम के सगरे वैष्णव जोरी के श्री गुसाई जी के दर्शन को आए। तब श्री गुसाई जी भोजन करी के विश्राम करी के जागे, तब वही समय श्री गोवर्धन नाथ जी आप आए के स्वप्न में श्री गुसाई जी सो कहे, चोया गाम में एक दुर्बल पिंगला वैष्णव है, सो ताको श्री यमुना जी नित्य महाप्रसाद लेवावती है, ताते वहां पधारी के दर्शन देउगे, तब वह को कार्य सिद्ध होई गो। भाव प्रकाश यह कही यह जताए, जो श्री यमुना जी ने कृपा करी, अब या पे आप कृपा करो, तब वह को कार्य सिद्ध होय, काहे ते जो गुरुन की कृपा बिना जीव को कार्य सिद्ध होय नहीं। या में श्री यमुना जी होते श्री गुसाई जी की कृपा को उत्कर्ष विशेष कहे। तब श्री गुसाई जी आप जागे और अपने मन में विचार कियो, जो ये तो को देवी जीव दिशत है। तब श्री गुसाई जी को वा किशोरीबाई के ऊपर दया आई, सो आप वा किशोरीबाई के घर पधारे। तब आपकी दृष्टि वा किशोरीबाई के अंग अंग ऊपर पड़ी। तब ताही समय किशोरीबाई की देह अलौकिक सेवा उपयोगी निर्मल निर्विकार भई। बोलो श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जू की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। गुरुनी दृष्टि पड़ता तेना अंग अंग अलौकिक सेवा उपयोगी निर्मल અને નિર્વિકાર બની ગયા। आखिन सो देखन लागी, कानन सो सुनन लागी। तब ताही समय श्री गुसाई जी को 16 श्रृंगार सहित श्री यमुना जी को दर्शन भयो। तब आपू देखे तो श्री यमुना जी किशोरीबाई के पास बैठे हैं। तब श्री यमुना जी को श्री गुसाई जी ने दंडवत करी। तब श्री यमुना जी ने श्री गुसाई जी से दंडवत करी। तब श्री गुसाई जी कहे, जो हम तिहारे लिए आए हैं ताते ऐसी मती करो। અહીં એક ખુલાસો કરવાનો, મેં પણ કાલિંદી બેટીજીના વતનામૃતમાં સાંભળ્યું હતું। એટલે શ્રી ગુસાઈજી શ્રીનાથજી સ્વયં ભૂતલ પર ફરી પાછા શ્રી ગુસાઈજી સ્વરૂપે પધાર્યા છે અને જ્યારે શ્રી ગુસાઈજીએ યમુનાજીને દંડવત કર્યા, એટલે યમુનાજી મોટા છે એટલે ગુસાઈજી તો દંડવત કરે જ, પરંતુ શ્રી યમુનાજીએ ગુસાઈજીને શા માટે કર્યા? તો જેવી રીતે ગુસાઈજીને શ્રી યમુનાજીના 16 શ્રૃંગાર સર્જેલા દર્શન થયા, તેવી રીતે યમુનાજીને શ્રી ગુસાઈજીમાં શ્રીનાથજીના દર્શન થયા। એટલે શ્રીનાથજી સ્વયં શ્રી ગુસાઈજીના સ્વરૂપમાં કિશોરીબાઈ પર કૃપા કરવા પધાર્યા હતા। આવું તેમાં હતું। એટલે શ્રી યમુનાજીએ
સામે દંડવત કર્યા. એટલે શ્રી ગુસાઈજીને તો ખબર ન હોય ને કે શ્રીનાથજી પધાર્યા છે, એટલે એમ કે છે કે તુમ આપ આવી રીતે ના કરો. तब श्री गुसाई जी फेरी श्री यमुना जी से पूछे, जो यह कारण कहा है, तू अपने हस्त कमल सो श्रम करत हो. तब यमुना जी कहे, जो यह श्री आचार्य जी महाप्रभु को वाक्य है, जो को श्री यमुनाष्टक को पाठ करत है, ताको हम प्रीति सो निज लीला के निज जल सुस्त्रवा स्नान करावती है. ध्यान आपजो, जो को श्री यमुनाष्टक को पाठ करत है, ताको हम प्रीति सो निज लीला के निज जल सो स्नान करावती है. ताते वाके सकल दुरितन को क्षय होत है. मुकुंद में रति बढ़ावती है और मुकुंद की रति या जीव में बढ़ावती है. या प्रकार को स्वरूप उज्जवल करती है. यम को नहीं दिखावत है और वाको पुष्टि मार्ग में प्रवेश करावती है. परंतु तुम्हारे कुल में नाम निवेदन करत है और श्री यमुनाष्टक को पाठ करत है, ताको रासलीला को सुख होत है. ध्यान आपजो, આપણે બ્રહ્મ સંબંધ ન લીધું હોય અને ફક્ત યમનાષ્ટકનો પાઠ કરતા હોઈએ તો તેનું ફળ અલગ છે, અને ગુરુદેવ પાસે બ્રહ્મ સંબંધ લીધું હોય અને યમનાષ્ટકનો પાઠ કરીએ તેને રાસલીલાનો અનુભવ શ્રી યમુનાજી અને શ્રી ગુસાઈજીની કૃપાથી થાય છે. ભાવ પ્રકાશ श्रीनाथजी यह कही वल्लभ कुल के सरनी को उत्कर्ष दिखाए. सो कहा, जो वल्लभ कुल के सरनी बिना पुष्टि रास में प्रवेश हो नहीं. और श्री आचार्य जी के वचन को उत्कर्ष कहे, जो केवल यमुनाष्टक के पाठ मात्र सो श्री यमुना जी अष्ट ऐश्वर्य को दान करत है. सो यह किशोरी बाई यमुनाष्टक के अर्ध श्लोक को पाठ कर अष्ट प्रहर प्रीति सो गुप्त रीति सो नित्य करत है. ताते हम अपने श्री हस्त कमल सो महाप्रसाद लीवावत है. और अब ये शुद्ध भय है, ताते आप इनको सेवा पधराई दीजिए. पाछे किशोरी बाई ने श्री गुसाई जी सो विनती कीनी, जो महाराज मो पिंगला पे बड़ी कृपा करी, ताते आप अब जो आज्ञा करो सो करो. तब आपने कृपा करी के एक बंटी में रमन रेती पधराई दिए. श्रीनाथ जी, हवे आ रजनो प्रताप जोजो, जो या की तू सेवा भली भांति सो करियो, और या बंटी को गादी के ऊपर पधराई के अपने श्री हस्त कमल सो सेवा करी के पाछे किशोरी बाई को श्री गुसाई जी ने सब सेवा की रीति भांति सिखाई. ता पाछे किशोरी बाई निकी भांति सो सेवा करन लागी. सब वैष्णवन को लिवावती. सो एक दिन वह किशोरी बाई ने श्री नवनीत प्रिया जी को गादी तकियान के ऊपर खेलते देखे. तब वह किशोरी बाई अपने मन में बहुत प्रसन्न भई और श्री ठाकुर जी की सेवा बहुत प्रीति सो करन लागी. सो किशोरी बाई सूत बहुत काटती. सो एक दिन एक वैष्णव ने किशोरी बाई को कछु सामग्री दीनी हती. तब किशोरी बाई ने सिद्ध करी के श्री ठाकुर जी को भोग समर्पियो. ता दिन श्री ठाकुर जी आरोग्य को पधारे नहीं. तब किशोरी बाई ने अपने मन में बहुत खेद करन लगी. तब श्री ठाकुर जी बोले, जो तेने मेरे लिए सामग्री क्यों लीनी, सो हम कैसे आरोगे. या मैं यह जताई, जो वैष्णव को और की सत्ता सामग्री अपने श्री ठाकुर जी को आरोगावनी नहीं, और कछु वैष्णव पेते लेके श्री ठाकुर जी को विनियोग न करावनु. सो श्री ठाकुर जी अंगीकार न करे. वाला वैष्णवो, पहला मने खबर न हती એટલે એવું થાતું. અમારા મમ્મી એટલે મારા સાસુ ક્યારેય કોઈનું એવી રીતે ધરાવે નહીં, ત્યારે મને એમ થતું કે આવું કેમ કરતા હશે. પણ અહીં કહ્યું છે કે કોઈની સત્તાનું આપણા ઠાકોરજીને ધરાવાય નહીં. तब किशोरी बाई के घर में श्री ठाकुर जी श्री स्वामिनी जी सहित लीला करत है. एक પછી એક કૃપા વધતી જ જાય છે. એમ કરતા કરતા ચરવિત તાંબુલ સુધી પહોંચશે. પહેલા ખાલી ઠાકોરજી બંટીજીની આજુબાજુ ખેલતા હોય એવા દર્શન થયા. હવે ઠાકોરજી સ્વામિનીજી સહિત લીલા કરે છે એવા દર્શન થયા. એટલે સૌપ્રથમ શ્રી યમુનાજીએ કૃપા કરી, ત્યાર પછી શ્રી ગુસાઈજીએ કૃપા કરી, શ્રી ઠાકોરજીએ કૃપા કરી, શ્રી નવનીત પ્રિયાજીએ ખેલતા દર્શન આપ્યા, અને હવે स्वामिनीजीની કૃપા પણ થઈ. सो यह किशोरी बाई सब रस को दर्शन करती. सो ऐसे करत किशोरी बाई श्री नाथ जी द्वार श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को आई. तब श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करी के बहुत प्रसन्न भई. तब श्री गोवर्धन नाथ जी वह किशोरी बाई को देखी के हंसे. श्रीनाथ जी. तब किशोरी बाई यूं हंसी. तब ता समय लोग लुगाई दर्शन करत हते. सो तीन ने श्री गोवर्धन नाथ जी को हंसत देखे. तब यह बात वैष्णवन ने जाए के श्री गुसाई जी सो कही,
जो महाराज किशोरीबाई और श्री गोवर्धन जी परस्पर हसत थे, ताको कारण कहा है। तब श्री गुसाई जी इन वैष्णवंशों कहे, जो श्री किशोरीबाई श्री गोवर्धन नाथ जी की और श्री यमुना जी की बड़ी ही कृपा पात्र है। सो किशोरीबाई से श्री गोवर्धन नाथ जी को स्पर्श है। और फिर ये रामदास वितरिया ने श्री गुसाई जी से पूछ्यो। तब श्री गुसाई जी ने कहियो, जो या किशोरीबाई पे तो श्री यमुना जी की कृपा है और श्री आचार्य जी महाप्रभु की कृपा भई है, तब हम हूँ या प्रकार कृपा करी है। तब रामदास पितरिया ने कहियो, जो महाराज यह कौन जीव है। तब श्री गुसाई जी रामदास पितरिया सो अपने श्री मुख सो आज्ञा किए, जो यह पहले श्री नंदराय जी के घर की टहल करत थी। सो या किशोरीबाई ने श्री ठाकुर जी को माखन बहुत खवाયું। सो एक दिन श्री यमुना जी में जूठे बासन धोए हते। सो ता કરી કે શરીરે સો દુઃખ ભયો। અરે શ્રીનાથજી, આ મારા માટે જ આવ્યું હશે પ્રભુ બધું। ધ્યાન આપજો, અહીં કહે છે કે કિશોરીબાઈ ગયા જન્મમાં ઠાકોરજીને ખૂબ લાડ લડાવતા ને નંદરાયજીના ઘરની ટેન કરતા, પણ પરંતુ એક વખત યમુનાજીમાં એઠા વાસણ ધોયા હતા એટલે એને આ બધું દુઃખ ભોગવવું પડ્યું। એટલે ઘણી વખત આપણને એમ થાય કે મને આટલું બધું દુઃખ શા માટે, હું તો કોઈનું કંઈ ખરાબ કરતી નથી, પરંતુ આગલા પાછલા આપણા કંઈક અપરાધ હોય તે અપરાધને દૂર કરવા, એને નિવૃત્ત કરવા પ્રભુ આ બધી લીલા કરતા હોય છે। भाव प्रकाश। यह वार्ता को अभिप्राय यह है, जो श्री यमुना जी साक्षात रसात्मक है, सो श्री यमुना जल वो रस रूप है। तातो वा जल में लौकिक बुद्धि करी जो को बासन मांझे कुल्ला करे, तो वा को ऐसी गति होय। ताते वे श्रवण को श्री यमुना जल ते कोई कार्य करनो नहीं, रसोई आदि कछु न करनो, केवल श्री ठाकुर जी की झारी भरे यह जताए। और ये किशोरीबाई लीला में कुमारिका के युद्ध में है। उहाँ इनको नाम किशोरी है। ये कुमुदिनी ते प्रगति है श्रीनाथ जी। कुमुदिनी એટલે જે રાતે ખીલે તે ताते उनके सात्विक भाव रूप है। सो श्रीनाथ जी की तथा श्री यमुना जी की तथा श्री गुसाई जी की किशोरीबाई पे बड़ी कृपा हती। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जो की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। હવે ચરવી તાંબુલનો આવશે વાલા વૈષ્ણવો, પરંતુ લાઈનમાં લઈએ તો કૃપા વધતી જ જાય છે ખબર પડે એટલે। और एक समय श्री गुसाई जी ने श्री गोवर्धन जी को उत्थापन किया। तब किशोरीबाई अपने अंग में सौंधो लगाए के श्रीनाथ जी के मंदिर में गई। सो किशोरीबाई को ऐसो भाव હતો। और एक दिन श्री गुसाई जी ने अपने मन में विचार किया, जो यह किशोरीबाई ने श्री नंदराय जी के घर में लीला को सुख देखियो है और अबहु बाल लीला को सुख देखत है, परंतु रास लीला को सुख देखियो नहीं है। ताते श्री गुसाई जी आप बिलछू वन पधारे। सो तहाँ एक पद श्री गुसाई जी ने गायो। सो ता समय किशोरीबाई श्री गुसाई जी के पास हती। सो वैशाख महीना के दिन हते। सो पद प्रीतम प्यारी पिया ये पग धारो, प्रीति यही चली आई, प्रगट नैनन लागी तारी, रस भरे गिरिधारी, प्यारी मणि मंदिर मुरारी, तापर पूरन रस सो भरे, आली तिनकी लीला निसौ जियारी, श्री विठ्ठल गिरिधर देखी अतहरी, ये प्रगट नृत्यकारी। सो यह कीर्तन में श्री गुसाई जी आपको तथा किशोरीबाई को चित्त गढ़ी गयो। तब ता समय किशोरीबाई को रासलीला को दर्शन करवायो श्रीनाथ जी। तब श्री गुसाई जी ता समय किशोरीबाई को चरवित तांबूल दियो। वाला वैष्णव હવે ચરવિત તાંબૂલનો શો પ્રભાવ થાય છે જોવાનું છે। ચરવિત તાંબૂલ અંદર ગયું અને શું પ્રગટ થયું તે સમજવાનું છે। શ્રી ગુસાઈજી તા समय किशोरीबाई को चरवित तांबूल दियो और अनेक जूथ दिखावत भई और दामोदर दास को हो जूथन में देखत भई। એટલે યુથ રાસલીલા જે થઈ રહી હતી એ યુથમાં ध्यान आपजो कहे छे कि अनेक युथ दिखावत भय और दामोदर दास को हो युथन में देखत भई तथा और हो सब वैष्णवन को देखत भई। सो ताके मती किशोरीबाई ने अपने स्वरूप को हो देखियो, जो मेरो हो स्वरूप लीला में है, जो केदार राग रस भरियो गाई रही है। सो रस की वार्ता है। सो श्री गोकुलनाथ जी रस मंजरी की टीका लिखी है। तहाँ दामोदर दास जी को अद्भुत स्वरूप है। सो तहाँ किशोरीबाई ने देखियो। सो परम सौभाग्यमान है। स्वरूप अपार जाको पार नहीं, सो पयो जात है और हूँ ताके पीछे सगरे वैष्णव ठाडे हैं। तब किशोरीबाई ने श्री गुसाई जी से विनती की, जो महाराज ये वैष्णव है तैसे मैं हूँ पृथ्वी पर हूँ और सर्वलीला में देखी, ताको कारण कहा।
तब श्री गुसाई जी ने किशोरी बाई से कहियो जो या मार्ग में वैष्णव है तीन के तीन स्वरूप है। આપણે આ ખૂબ જ સમજવા જેવું છે। વૈષ્ણવના ત્રણ સ્વરૂપ છે, एक आदि भौतिक, दूसरा आध्यात्मिक और तीसरा आदि दैविक। आदि भौतिक है सो तो संसार में है, आदि दैविक है सो नित्य लीला में है, आध्यात्मिक है सो लीला मध्यपाती है। सो ऐसे तीन प्रकार के हमारे वैष्णव हैं। सो मार्ग की रीति करी के जो सेवा करत है और भावना सो लीला को अनुभव हो करत है सो बड़भागी है, और हम तो देवी जीवन के उदार अर्थ प्रकट भये हैं। तब किशोरी बाई ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराजा धीराज आप तो सर्व सामर्थ्यवान हो, जो चाहो सो करो, आप तो स्वामिनी जी को स्वरूप हो और सब भांति करी के हमारे मनोरथ पूर्ण करत हो, जो या लीला को सुख दिखाओ। पाछी किशोरी बाई ने श्री गुसाई जी को दंडवत कीनी। तब श्री गुसाई जी ने श्री मुक्ते आशीर्वाद दियो और माथे ऊपर श्री हस्त कमल धरे, और श्री मुक्ते कहे जो सर्वदा वैष्णवन को संग करियो। तब ता समय चाचा हरिवंश जी बैठे हते। तब चाचा हरिवंश जी ने श्री गुसाई जी से पूछियो, जो महाराजा धीराज यह कहा कारण है जो किशोरी बाई के माथे ऊपर श्री हस्त कमल धरे और आज्ञा किए, जो सदा सर्वदा भगवदियन को संग करियो, गंगा जल सो जल मिले तो वो गंगा जल समान है, और आशीर्वाद दियो ताको हेतु कहा। तब श्री गुसाई जी श्री मुक्ते कहे, जो भगवदियों को स्वरूप है सो गंगा जल रूप है, सो ताही ते उन्हीं से मिले ते हमारो स्वरूप जानेगी। ताते कहियो जो भगवदियन को सत्संग करनो और उनकी वार्ता चर्चा सुनत रहनी, उन्हीं के हाथ को महाप्रसाद लीजिए। यह सुनी के चाचा जी बहुत प्रसन्न भय और श्री गुसाई जी आप आज्ञा किए, जो किशोरी बाई को जन्म फेरी भूतल पे होएगो और सो श्री गोकुलनाथ जी की बहुजी होएगी। सो यह वार्ता गोप्य है, सो सोनी के हृदय में राखेगो। या वार्ता में श्री यमुना जी श्री गुसाई जी को स्वरूप कहे, जो श्री यमुना जी और श्री गुसाई जी दो परम दयाल हैं। दोनों को प्रागट्य देवी जीव के उदार अर्थ है। श्री यमुना जी जब कृपा करे तब जीव को सेवा उपयोगी नूतन देह की प्राप्ति भय, और श्री गुसाई जी कृपा करे ता जीव को लीला को अनुभव होय, निज अंतरंग सृष्टि में अंगीकार होय, ताते जीव को दोन को आश्रय कर्तव्य है, यह जताए। सो यह किशोरी बाई श्री गुसाई जी की ऐसी परम कृपा पात्र भगवदीय है, ताकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। હવે અધરમ મધુરમમાં વાર્તા સંગતિ છે 252 વૈષ્ણવ વાર્તા 223મી એક શેઠની દીકરી જેણે મદન મોહનજી કર્યા। આપણે આખી વાર્તા નહીં લઈએ, પરંતુ એ શેઠની દીકરી નાનપણથી જ જ્યારે શ્રી ગુસાઈજીની સેવકની થઈ અને શ્રી ગુસાઈજીએ મદન મોહનજીનું સ્વરૂપ પધરાવી આપ્યું, ત્યારે એ દીકરીએ પૂછ્યું હતું કે શું ઠાકોરજી આવા જ હોય? ત્યારે ગુસાઈજીએ કહ્યું કે હા, ઠાકોરજી આવા જ હોય। એટલે તેને બીજા કોઈ સ્વરૂપને ક્યારે ઝાંખી જ કરી નથી, એટલે એને એમ જ હતું કે ઠાકોરજી આવા જ હોય। એમ કરતા કરતા તે ખૂબ મોટી થઈ ગઈ અને આ શેઠની દીકરીનું લીલામાં નામ છે કૃષ્ણ હિતા, એટલે કે જે શ્રી કૃષ્ણનું હિત જ વિચારે છે। અને આ વાર્તામાં પણ આપણે જોઈએ કે ઠાકોરજીના सुखनो ज ए विचार करे छे। એટલે ये बेटी सात्विक भक्त है, लीला में इनको नाम कृष्ण हिता है, सो कृष्ण की सदा हित करवे वाली है। ये चंद्रावली जी की सखी है, ये नंदाते प्रकटी है, ताते उनके भाव रूप है। और कृष्ण हिता की एक सखी है, वा को नाम गार्गी है। सो यहाँ विरक्त भयो। એટલે આ દીકરી નાની હતી ત્યારથી સેવા કરે છે, ત્યારથી એ ડોકરી બની ગઈ તો પણ ઠાકોરજીની સેવા એ કરે છે, એટલે મદન મોહનજીની સેવા કરે છે। એક વખત વિરક્ત વૈષ્ણવ તેને ત્યાં આવે છે ઝાપીજીમાં પોતાના ઠાકોરજી બાલકૃષ્ણજીને પધરાવીને, અને એ વિરક્ત વૈષ્ણવને ક્યાંક જવાનું હોય છે, એટલે તે કહે છે કે મારા ઠાકોરજી હું અહીં પધરાવી જાઉં? તો કહે કે હા, ઠંડીના દિવસો હોય છે। પછી હાલો આપણે વાર્તામાંથી જોઈએ એટલે વધારે આનંદ આવે। એટલે બાલકૃષ્ણજીનું સ્વરૂપ જોયું એટલે ઝાપીજી ખોલ્યા, वा वैष्णव ने कपड़ा सुखाई दिए और झांपी डोकरी के आगे धरी। तब वो संग में तालाब ऊपर आयो। तब वो डोकरी राजभोग की सामग्री सिद्ध करी चुकी हती। सो उन वैष्णवन की झांपी खोली, सो श्री बालकृष्ण जी को स्वरूप देखियो।
सो नीचे ऊपर देखी के चक्रत वह रही। मन में कही जो इनके हाथ पांव टेढ़े हो गए हैं और हाथ में लडुआ है, ऐसे ठाकुर जी क्यों भय? सो श्री गुसाई जी सो प्रथम पूछी लेनी हती जो श्री ठाकुर जी ऐसे ही होते। तब श्री गुसाई जी कहे हाँ ऐसे ही होते। એટલે એને મદન મોહનજી નું મુરલીધર સ્વરૂપ જ જોયું હતું, એટલે એને એમ કે ઠાકોરજી ઠંડીના ઠૂઠવાઈ ગયા છે, એટલે અને આ વૈષ્ણવ વિરક્ત છે, એટલે એને બીજી કાંઈ બધું સાથે લેવાની ને કાંઈ ખબર નથી, એટલે કહે છે કે शीतकाल में ठाकुर जी को लेके निकसियो है, सो मार्ग में मारे शीत के ठाकुर जी के हाथ पांव अकड़ गए हैं। पाछे ठाकुर जी को कहे जो महाराज यह वैष्णव बड़ो मूर्ख है, ताते तुम्हारो जतन न राख्यो। उनाले में श्री गोकुल जातो तो तुम्हारे हाथ पांव की कछु औषधि हूँ नहीं करनी पड़ती। पाछे तत्काल उठी के कोटरी में ते तेल ले, जायफल घीसी के डारियो, कस्तूरी घीसी के डारी, अंगीठी दुहेरी धरी श्री ठाकुर जी को आछे रुई के बिछोना मोटे पर पधराए, हाथ पांव श्री अंग ते तेल लगाए मर्दन करन लगी। श्रीनाथ जी और अति दिन होई बचन कहन लगी जो महाराज शीतकाल को तुमको बड़ो दुख भयो, जो हाथ पांव टेढ़े हो गए, या वैष्णव को तो ज्ञान न भयो, अब मैं कैसे करूं? श्री गुसाई जी ऐसे वैष्णव को विरक्त को ऐसी निधि क्यों पधराई दिए? परंतु श्री गुसाई जी आप परम दयाल है, ताते पधराई दिए, पर यह वैष्णव को ऐसो न चाहिए जो ऐसी शीत में लेके तुमको नहीं कसियो। અહીં આપણે સમજવાનું છે કે ઠાકોરજી સાથે વાતો કરવી જોઈએ। આ શેઠની દીકરી ઠાકોરજી સાથે વાતો કરે છે। ऐसे वैष्णव को घर बैठे सेवा करनी, सो तुम्हारी सेवा तो न बनी और ऐसी दशा तुम्हारी वा वैष्णव ने करी, अब मैं कैसे करूं? यह प्रकार अनेक वचन कही दुख करन लागी। हृदय में अग्नि सी उठी जो हाय हाय श्री प्रभु जी को ऐसो दुख देखी कि मेरी देह न छूटी, या भांति कही के तेल मसन लागी। श्रीनाथ जी तब श्री ठाकुर जी ने विचारी जो देखो या बाई को कैसो सीधो भाव है, ताते मैं जहाँ ताई हाथ पांव सुधे ना करूंगो तहाँ ताई यह छोड़ेगी नहीं। श्रीनाथ जी राजभोग की सामग्री शीतल हो जाएगी, तहाँ ताई याहू के ठाकुर जी भूखे बैठे रहेंगे। એટલે ભક્તને વશ થઈ પ્રભુએ પોતાનું સ્વરૂપ બદલાવ્યું और यह तो प्रेम विवश हो गई है। या प्रकार ठाकुर जी ने विचारी के आप हूँ प्रेम विवश हो के हाथ पांव तत्काल सीधे कर दिए, ठाडे होई मुरली मनोहर वहे। श्रीनाथ जी बोलो श्री मदन मोहन प्यारे की जय। जैसे याके ठाकुर रहते तैसे ही श्याम सुंदर मुरली मनोहर भय। तब यह डोकरी अत्यंत प्रसन्न भई, मन में कही जो अब श्री ठाकुर जी टेढ़े ते सुधे भये। श्रीनाथ जी मैं कही जो ठाकुर जी ऐसे क्यों भय? मेरे ठाकुर से मुरली मनोहर हो गए, हाथ पांव टेढ़े भय हते सो आछे भय। तब तत्काल रुई के दूहरे वागा, टोपा, फरगुल, गदल और पासी अंगीठी धरी। तब तत्काल बादाम को सीरा, कस्तूरी डारी के सिद्ध करी राजभोग धरन लागी। सो अपने ठाकुर जी के आगे एक थाल धरियो, तामे दही मिठाई आदि सगरी सामग्री धरी और यह विरक्त वैष्णव के ठाकुर जी से विनती करी जो महाराज तुमको गोरस बहुत प्रिय है, सो मैं जानत हूँ, परंतु तुम्हारे हाथ पांव अकड़ गए हैं, ताते तुम आज आछे भय हो, ताते 2-4 दिन ताती सामग्री आरोगो, श्री अंग में बल होएगो। श्रीनाथ जी आ साक्षात करीने जानिया कहवाय। तब मैं दही मठा बहुत आरोगाऊंगी, चिंता मती करियो, शीतकाल पर्यंत वैष्णव को अपने घर राखूंगी, ताते अब दही मठा शीतल सामग्री मती आरोग्य। सो यह प्रकार अत्यंत प्रीति सो राजभोग धरी टेरा लगाई, रसोई के पात्र मांझी रसोई पोती, ता पाछे भोग सराय आचमन, ताते जलसो कराय, बीड़ा आरोगाय, पाछे वा विरक्त को आरती के दर्शन करवाय। सो गदर रजाई में कछु जानियो नहीं, जो मेरे ठाकुर ठाडे स्वरूप है। पाछे डोकरी ने अनुसर कराई, वह वैष्णव को पात्री धरी, गाय की एक पात्री निकासी, वैष्णव को भली भांति सो महाप्रसाद ले आई। पाछे वा डोकरी ने महाप्रसाद लिए, पाछे डोकरी ने उत्थापन सेन पर्यंत सेवा सो पहुंची, पाछे ठाकुर जी को सेन करवाई। वह विरक्त वैष्णव के ठाकुर जी को 2 रजाई उठाई, अनुसर करी बाहर आई। तब वैष्णव को सेन को महाप्रसाद लेवायो। पाछे पोथी लेवा भगवत वार्ता करत अर्धी रात्रि भई। हे श्रीनाथ जी અહીં સમજવાનું છે કે વૈષ્ણવની દિનચર્યા કેવી હોવી જોઈએ। વૈષ્ણવોએ બીજા વૈષ્ણવને પ્રસાદ લેવડાવી, મહાપ્રસાદ લેવડાવીને પછી પ્રસાદ લેવો જોઈએ, એ આ બધું અહીં દર્શાવ્યું છે।
પછી भगवत वार्ता करी। तब वैष्णव बहुत प्रसन्न भई और कहो, जो डोकरी तेरो बड़ो भाग्य है, जो दिन को सेवा करत है, रात्रि को भगवत वार्ता करत है, तो को धन्य है। पाछे डोकरी ने कही, जो मार्ग के श्रमित हो सो अब सो जाओ। पाछे डोकरी ने बिछोना करी दीनो। तब वह विरक्त वैष्णव ने कही, जो डोकरी प्रातः काल बेगी उठियो, मंगला करी मेरे ठाकुर जी को पधराई दीजियो, सगरे वैष्णव चलेंगे। तब डोकरी ने कही, जो वैष्णव 10-5 दिन मेरे घर रह जाओ, अब ही शीत बहुत परत है, तुम्हारे ठाकुर जी को आराम भयो है। तब यह सुनी के वह वैष्णव ने डोकरी ते कही, जो डोकरी तू बावरी भई है, कैसे बोलत है? ठाकुर जी कहा मानदे होत है, तुम मानदे हो सो ऐसे बोलत हो, ताते मैं तो या संग में जाऊंगो। तब डोकरी ने कही, जो तो श्री गुसाई जी के सेवक हो के श्री ठाकुर जी को श्रम करवायो। श्री ठाकुर जी के हाथ पांव अकड़ी गए हते, सो तेल लगाए के सुधे किए हैं, ताते अभी तो शीत बहुत परत है, डोल पीछे जाइयो, सो तहाँ ताई ठाकुर जी को चैन हो जाएगो, और तुमको डोल पीछे मैं श्री गोकुल पहुंचाई देऊंगी। तब वैष्णव ने कहो, डोकरी तो बड़ी मूर्ख है, तेरे हाथ पांव अकड़ गए होंगे, जो मेरे ठाकुर जी को ऐसी बात कहत है, मैं तो सर्वथा सवेरे जाऊंगो, ताते तू मेरे ठाकुर जी राख्यो चाहत है। એટલે હવે આપણે ટૂંકમાં લઈએ, એટલે અહીં બંને ઝઘડો કરે છે, એટલે અલૌકિકનો ઝઘડો કેવો ફલરૂપ છે એ પણ આપણે અહીં સમજવાનું છે। એટલે આ વિરક્ત વૈષ્ણવ કહે છે કે તે મારા ઠાકોરજી બદલાવી લીધા છે, અને આ ડોકરી કહે છે કે ના, મેં નથી બદલાવ્યા, તારા ઠાકોરજી ઠંડીના ઠૂઠવાઈ ગયા હતા, એટલે મેં તેલ માલિશ કરીને સીધા કરી દીધા છે। એટલે એવી રીતે ઝઘડો કરે છે। પછી નક્કી કરે છે કે આપણે શ્રી ગુસાઈજી પાસે જઈએ તો ખબર પડે। આ ઝઘડો હવે તે જ મટાડશે। એટલે શ્રી ગુસાઈજી પાસે જાય છે, અને એટલે આ વૈષ્ણવને સાથે લઈને ગાડી કરીને આ ડોકરી જાય છે। અહીં એ પણ સમજવાનું છે કે ડોકરી ક્યારેય ઘરની બહાર નીકળી જ નથી। આ ઝઘડાના બહાને શ્રી ગુસાઈજીના એને દર્શન પણ થશે, ઠાકોરજીના દર્શન થશે, ગિરિરાજજીના દર્શન થશે। એટલે અલૌકિકમાં ઝઘડો પણ કેવો ફલરૂપ હોય છે તે જોવાનું છે। એટલે ગાડી કરીને બંને જાય છે। પછી શું માર્ગ મેં નિત્ય લડત જાય શ્રીનાથજી, એટલે રસ્તામાં પણ બંને ઝઘડો કરતા જાય છે। વૈષ્ણવ કહે, जो मेरे श्री बालकृष्ण जी तेने पलटी लीने हैं। डोकरी कहे, जो तू यही प्रकार सेवा करत है, सो श्री ठाकुर जी के हाथ पांव अकड़ी गए हैं, सो शीत में सो श्री ठाकुर जी पीरे पड़ गए हैं। अब साचो है तो देखी श्री गुसाई जी कहा कहेंगे। सो या भांति नित्य झगड़ो करत कर श्री गोकुल लाए। सो नवनीत प्रिया जी के राजभोग आरती के दर्शन किए। पाछे श्री गुसाई जी श्री नवनीत प्रिया जी को अनुसर कराई के अपनी बैठक में गादी तकियान में बिराजे। तब वह विरक्त वैष्णव ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज या डोकरी ने मेरे ठाकुर जी श्री बालकृष्ण जी आपो पधराई दिए हते, सो पलटी लिए हैं। तब श्री गुसाई जी कहे, जो डोकरी कैसे है? यह वैष्णव कहा कहत है। तब डोकरी ने कही, जो महाराज ऐसे के हाथ श्री ठाकुर जी मती पधराई करो। शीतकाल में श्री ठाकुर जी को ले निकसियो है, सो वस्त्र सामग्री भेली नहीं है, ताते जाड़े में એટલે કે ठंडी में श्री ठाकुर जी को पीरे कियो और हाथ पांव अकड़ी गए हते। सो मैंने तेल में जायफल कस्तूरी मिलाए के मिसले दूहरी अंगीठी आगे धरी, तब श्री ठाकुर जी सीधे बोले, श्रीनाथ जी ता पर यह वैष्णव झगड़ो करत है। तब श्री गुसाई जी कहे, जो श्री ठाकुर जी कहाँ है? तब डोकरी कहे, जो मेरे पास झापी में या के और मेरे वो ठाकुर जी सोए हैं, पढ़े हैं, तो आप या वैष्णव को समझाए के झगड़ो मिटाए देव। तब श्री गुसाई जी कहे, जो श्री ठाकुर जी की झापी हमको देव। तब डोकरी ने झापी श्री गुसाई जी के आगे धरी। तब श्री गुसाई जी ने वह वैष्णव और डोकरी सो कही, जो तुम यहाँ ही बैठी हो। तब आप झापी लेके कोठा भीतर पधारे और झापी खोली। तब श्री गुसाई जी ने श्री ठाकुर जी से पूछी, जो बाबा यह कहा है? तब वैष्णव के ठाकुर जी ने एला विरक्त वैष्णव ठाकुर जी ने कही, सो डोकरी को दूसरी भांति आई। जो श्री ठाकुर जी और भांति के न होंगे। तब तेने तेल मसलन लागी। जब मैं सूधो भयो, 2 चरण कमल सीधे करे, तब वैष्णव ने देख के झगड़ो करियो। ताते तुम या वैष्णव को समझाओ, जो मोपे या डोकरी को हेत प्रसन्नता अत्यंत है, कारण के नाम कृष्ण हिता है। श्रीनाथ जी वात्सल्य स्नेह बहुत है, जो मोह बिना और कछु जानत नहीं। तब श्री गुसाई जी ने या वैष्णव सो कही, जो वैष्णव यह श्याम स्वरूप मुरली मनोहर तेरे हैं, या के भाव ते ऐसे हो गए हैं। यह डोकरी साची है,
तेरो मन लालजी में होय तो हम दूसरे श्री बालकृष्ण जी पधराई दे, इन स्वरूप को हम राखे। तब या वैष्णव ने कही, जो महाराज हम कितने दिन से सेवा करत हैं, परंतु श्री ठाकुर जी रंचक को अनुभव नहीं जनायो, और या डोकरी ने एक दिन में ठाकुर जी बस किए श्रीनाथ जी। तब श्री गुसाई जी कहे, जो यह पुष्टि मार्ग में प्रमाण नहीं, ऐसे ही जन्म व्यतीत हो जाए, जहाँ ताई स्नेह न होय तहाँ ताई श्री ठाकुर जी अनुभव नहीं जनावे। जो स्नेह होय तो श्री ठाकुर जी एक क्षण में प्रसन्न होय। હવે ચરવિત તાંબુલ નો આવશે। यह कही यह जताए, जो प्रभु तो भाव प्रीति के अधीन है, को कितनी ही आचार क्रिया करो, रीति अनुसार सेवा स्मरण हो करो, पर प्रीति ना होय तो श्री ठाकुर जी अनुभव ना जनावे। और पुष्टि मार्ग में काल नियामक नहीं है, जो दूसरे दिन इतने काल पर्यंत सेवा करे तब श्री ठाकुर जी अनुभव जतावे, ऐसो नहीं है। या पुष्टि मार्ग में भगवद अनुग्रह ही नियामक है, ताते भगवद अनुग्रह होय तो एक क्षण में प्रभु अनुभव जतावे। यह कहे, तब यह वैष्णव या डोकरी के पावन पर्यो और कही, जो मैंने तुम्हारो स्वरूप जानियो नहीं, तुम पर क्रोध कियो, अनेक वचन कहे, ताते मोह पर कृपा करो। सो मोह पर श्री ठाकुर जी सा अनुभव होय, मैं सगरो जन्म यो ही गमायो, ताते भगवदिया के संग मैं मन उपजियो। तब डोकरी ने कही, जो वैष्णव ऐसे मती कहो, मुँह पर तुमने बड़ी कृपा करी, या प्रकार तुम हम झगड़ो न करते तो मैं श्री गुसाई जी के दर्शन तथा गोकुल के दर्शन तथा श्री जमनापान कैसे करती। ताते वैष्णव को श्री गुसाई जी श्री ठाकुर जी करत है, सो आछो ही करत है, जामे जीव को कल्याण होय। એટલે આપણી સાથે કંઈ પણ આપણું મનનું ધાર્યું ન બન્યું હોય, કોઈ પણ તકલીફ આવી હોય, પરંતુ એ આપણે ધ્યાન રાખવાનું કે બધું પ્રભુ આપણા હિતમાં જ કરે છે। કોઈ મુશ્કેલી આવે પડે તો પ્રભુએ સૂડીનો ઘા સોઈએ કાઢ્યો છે એ સમજવાનું છે, પરંતુ જ્યારે આપત્તિ આવે ત્યારે આપણે બધું ભૂલી જઈએ અને ફરિયાદ કરીએ કે હે પ્રભુ તે મારી સાથે આવું કેમ કર્યું। અહીં ડોકરી પણ કહે છે કે ભલે તેને મેં ઝઘડો કર્યો તો આ બધું મેળવ્યું। ગુસાઈજીના દર્શન થયા, યમનાપાન થયા, ગોકુલના દર્શન થયા। એ રીતે ભાવ પ્રકાશમાં કહે છે, यह कही यह जताए, जो वैष्णवन को झगड़ो हो प्रभुन को रुचत है श्रीनाथ जी। એટલે આપણા ઘરમાં પણ અલૌકિક માટે થોડોક ઝઘડો થતો હોય તો તેમાં ડરવાનું નહીં, એ પણ પ્રભુને રૂચે છે। જેવી રીતે એકલું મીઠું મીઠું ન ભાવે, ભેગું થોડુંક નમકીન પણ જોઈએ, એમ પ્રભુને બધું જોતું હોય। और झगड़ो होय सहु कृपा करन अर्थ जाननो, सोवा झगड़ा में मिशते या डोकरी को व्रज श्री यमुना जी, श्री गुसाई जी, श्री गोवर्धन जी के दर्शन भय। नातर ठाकुर वहैया भेद को खोल के डोकरी सो कहते तो डोकरी श्री गोकुल कैसे आवती। ताते यह जाननो, जो वैष्णव को झगड़ो हो कृपा करन अर्थ है, ताते वैष्णव तुम्हारो मन होय तो श्री ठाकुर जी को न्यारो पधराओ, जहाँ इच्छा होय तहाँ सेवा करो। तब तुम्हारो मन प्रसन्न होए तो मेरे पास रह के सेवा करो, दो जनन के श्री ठाकुर जी संग बिराजेंगे, मेरो मन तुम ऊपर प्रसन्न है। कहते, जो तुमने श्री ठाकुर जी के ऊपर झगड़ो करियो, श्री ठाकुर जी में प्रीति हती तब झगड़ो करियो श्रीनाथ जी, ताते तुम्हारो मन तो श्री ठाकुर जी में बहुत है। ऐसे वैष्णव को संग तो एक क्षण दुर्लभ है। तब वैष्णव ने कही, जो मैं तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारे संग में मुँह पर श्री ठाकुर जी कृपा करेंगे, तुम धन्य हो। मैं तुमसे इतनी द्वेष बुद्धि करी और तुमको अवगुण नहीं आयो। भगवद्य के लक्षण सुने हते सो देखे। पाछे श्री गुसाई जी दो उनको झगड़ो मिटाई के झांपी डोकरी को देनी और कही, जो तुम दो एक ठोरे रहियो। तब वह विरक्त वैष्णव ने कही, जो महाराज जहाँ लगी मैं जीऊंगो तहाँ तक इनके घर में रहूंगो। ता पाछे श्री गुसाई जी भोजन को पधारे, सो भोजन करी आचमन करी, बीड़ा आरोगी के दौन को जूठनी की पात्री धरी, सो दो जनन ने महाप्रसाद लेके आए के दंडवत कर्यो। पेला जूठनी की पात्री धरी पछी कहे छे, तब श्री गुसाई जी ने दो उनको उगार दिए। पाछे कछुक दिन श्री गोकुल में रह के व्रज यात्रा करी, पाछे गोकुल में आई के रहे। पाछे श्री गुसाई जी सो विदा होय के विरक्त वैष्णव वा डोकरी के घर आयो। सो जीवन पर्यंत श्री ठाकुर जी की सेवा वा डोकरी ने घर रही के करी। सो भगवदीय तादृशी वैष्णव की संगति ऐसी है, सो ए उह विरक्त लरत હતો પરિસંગતે યાકી બુદ્ધિ ફીરી। એટલે ઘરમાં પણ કંઈ પણ કલેશ થતો હોય તો બીજાએ શાંત થઈ જવાનું, સામો ગુસ્સો નહીં કરવાનું, તે આપણને અહીં સમજાય છે
કે ટીટ ફોર ટેટ એવું નહીં થવાનું, પરંતુ પ્રભુ ઉપર બધું છોડી દેવાનું, સમય ઉપર છોડી દેવાનું કે સમય જવાબ આપશે. એ આપણે અહીં શીખવાનું છે કે તાદ્રશી વૈષ્ણવના સંગથી આની બુદ્ધિ ફરી. એટલે ક્યારે પણ ક્યાંય પણ એવું હોય તો આપણે ઝઘડો ન કરીએ તો ક્યારેક સામે વ્યક્તિને પણ અફસોસ થાય કે મારે આવું ના કરવું જોઈએ. હવે વાર્તા એટલે આ વાર્તા અહીં વિરમે છે. હવે અધરમ મધુરમની વાર્તા સંગતિ 252 વૈષ્ણવ વાર્તા 250મી ચતુર્ભુજદાસજી. હવે આ વાર્તામાં કુમનદાસજીને પણ ઉગાર પ્રાપ્ત થયું છે, તે બંને આવી જશે. એટલે આપણે આ જોઈએ, થોડુંક લાંબુ થાય છે. जिनके पद गायत हैं तिनकी वार्ता को भाव कहत है. ये चतुर्भुजदास लीला में श्री ठाकुर जी के विशाल सखा को प्राकट्य है. 100 दिवस की लीला में तो ये विशाल सखा है और रात्रि की लीला में विमला सखी है. ये ललिता जी ते प्रकटी है, ताते इनके तामस भाव रूप है. वार्ता प्रसंग 1. આ પહેલા પ્રસંગમાં ચરિત તાંબુલનું આવશે, અધરામૃતનું. सो ये चतुर्भुजदास जमनावता में कुमनदास जी के यहाँ जन्म. सो कुमनदास जी के प्रथम 5 बेटा होते. 3 को मन लौकिक में बहुत आसक्त देखी के कुमनदास जी के मन में बहुत ही दुख भयो और मन में विचारे, जो मेरे को ऐसो पुत्र न भयो जाते हूँ अपने मन को भेद कहूँ. पाछे कुमनदास जी ने 5 बेटा को न्यारो कर दिए और कुमनदास जी की बहू श्री आचार्य जी महाप्रभु की सेवक थी और एक बेटी सो परम भगवदीय हती. सो वह बेटी हो श्री आचार्य जी महाप्रभु की सेवक थी. व्याह होते ही याको पुरुष तो मरी गयो, ताते वह बेटी એટલે કે भतीजी कुमनदास जी के घर रहती. सो तीनों जने जमनावते गाम में रहते हते. ता पाछे एक बेटा कुमनदास जी के और भयो, ताको नाम कुमनदास जी ने कृष्णदास धर्यो. सो कृष्णदास बड़े भये तब श्रीनाथ जी के गायन की सेवा करते और कीर्तन कोई न आवते. सो कृष्णदास ने श्रीनाथ जी की गाय बचाई और आपू नहार के सन्मुख होय के अपनो शरीर दियो. सो उनकी वार्ता में प्रसिद्ध है. पर कुमनदास जी के मन में यह मनोरथ, जो कोई ऐसो पुत्र न भयो जासो मैं अपने मन को भाव सब कहूँ और सब भगवत वार्ता करूँ. तासो कुमनदास जी उदास रहते. ता पाछे एक दिन श्री गोवर्धननाथ जी ने परासोली में कुमनदास से पूछी, जो कुंभना तू उदास क्यों है? तब कुमनदास ने कही, महाराज सत्संग नहीं है. फिर श्री गोवर्धननाथ जी ने मुस्काई के कहो, जो अरे कुमना सत्संग को फल जो मैं सो तो तेरे पाछे पाछे डोलत हूँ. श्रीनाथ जी तो को सत्संग की चाहना क्यों है? तब कुमनदास जी ने कही, जो महाराज भगवदियन के संग बिना जीव आपके स्वरूपानंद को कैसे जाने? आपके स्वरूप में रहियो जो आनंद सो तो भगवद्य ही जानत है और जानत नहीं. ताते भगवद्य के संग बिना आपके स्वरूप में मन उर्जत नहीं है. तब श्री गोवर्धननाथ जी ने हंसी के आज्ञा करी, जो कुंभना तू धन्य है, जा मैंने तो को सत्संग के लिए भगवदीय पुत्र दियो. तो वो कुमनदास जी यह विचारे के उदास रहते, जो कब पुत्र होएगो, फिर कब तो बड़ो होएगो और न जाने वो कौन से भाव में मगन रहेगो. श्रीनाथ जी ऐसे करत करत पुत्र होइवे को फिर समय भयो. सो कुमनदास जी की स्त्री को फिर गर्भ स्थिति भई. सो एक दिन श्री गोवर्धननाथ जी ने आए के श्री मुक्ति कुमनदास जी सो कही, जो कुमनदास तू मेरे संग चली. तब कुमनदास जी श्री गोवर्धननाथ जी के संग चले. सो एक व्रज भक्त के घर में श्रीनाथ जी पधारे. ये व्रज भक्त दही माखन की मथनिया 2 ऊंचे छीका पर धरी के आपू कछु कार्य को गई हती. श्रीनाथ जी सोता ही समय श्री गोवर्धननाथ जी तहाँ आई के आप एक हाथ से दही की मथनिया लई. तब ही श्री गोवर्धननाथ जी को पीताम्बर खुली गयो. सो भूमि में गिरन लाग्यो. सो श्री गोवर्धननाथ जी ने आप तत्काल दोई भुजा और नीचे प्रकट करी के पीताम्बर को थाम्यो. श्रीनाथ जी और दोई भुजान में माखन की दही की मथनिया लिए रहे. ता समय चतुर्भुज स्वरूप को कुमनदास जी को दर्शन भयो. ता पछी श्री गोवर्धननाथ जी तो सखन सहित दूध दही माखन सब आरोगे. बच्चों सो वन चरण को खवाई दियो. बच्चियों सो वन चरण को खवाई दियो. ताही समय वह गोपिका अपने घर में दौड़ी आई. सो वहाँ देखे तो दही माखन श्री ठाकुर जी आरोगत है. तब वह गोपिका श्री ठाकुर जी को पकड़वे को दौड़ी. तब सखा तो सब भाजी गए. तब कुमनदास जी और श्री गोवर्धननाथ जी ठाडे रह गए. सो जब वह गोपिका निकट आए
तब श्री गोवर्धन नाथ जी अपने श्री मुख में दूध भरी के वह गोपिका के मुख पर डारे। सो या प्रकार वह गोपिका के मुख पर डारे तो वाके सगरे मुख नेत्रन में दूध भरी दियो। सो वह ठाड़ी हुई रही। तब कुमनदास जी और श्री गोवर्धन नाथ जी वहां ते भाजे। सो श्री गोवर्धन नाथ जी आप तो अपने मंदिर में पधारे और कुमनदास जी जमनावते गांव में अपने घर गए। ता समय मार्ग में जात यह पद कुंभनदास जी ने गायो। आनी पाए हो हरिनी के, आनी पाए हो हरिनी के, चोरी चोरी दधी माखन खायो, गिरिधर दीन प्रतिहि के। रोक्यो भवन द्वार व्रज सुंदरी, नूपुर मोर अचानक ही के। अब कैसे जइयत घर अपने में, भाजन पोरी दूध दही पी के। कुंभन दास प्रभु भले परे फंद, जान न देहो भाव तेजी के। भरी गंडूस छींट दे नैनन में, गिरिधर धाय चले दे की के। એટલે જે પ્રસંગ બન્યો તેનું વર્ણન આ પદમાં આવ્યું। यह कीर्तन कुमनदासी करत चले। चतुर्भुज स्वरूप को जो दर्शन भयो હતો सो कुमनदासी ताके भाव में रस सो भरे अपने आप घर आई। ताही समय कुमनदास की स्त्री के बेटा भयो। सो सोनी के कुमनदासी ने कहियो जो या लड़का को नाम चतुर्भुज दास है। पाछे उत्थापन के समय श्री गुसाई जी के पास आई के कुमनदास जी ने दंडवत कियो। तब श्री गुसाई जी ने मुस्काई के कुमनदास जी सो पूछे जो चतुर्भुज दास आछे हैं। अरे श्रीनाथ जी, तब कुमनदास जी ने विनती की जो महाराज जाके ऊपर आप ऐसी कृपा करत हो सो तो सदा ही आछे हैं, ताको सब ठोर कल्याण ही है। तब श्री गुसाई जी ने कुमनदास जी सो कहे जो या पुत्र सो तुमको बहुत ही सुख होइगो। सो तुम्हारे मन में जैसो मनोरथ હતો ताही भांति सो तुम्हारे मनोरथ सब सिद्ध भये हैं। पाछे पिंडरू होई चुक्यो। तब कुमनदास जी आछे सुधी होई पुत्र को स्नान करायो और वाको अपनी गोदी में ले श्री गुसाई जी को आए के कुमनदास जी ने दंडवत करी। पाछे चतुर्भुज दास जी को मस्तक श्री गुसाई जी के चरण कमल सो परस कराई के कुमनदास जी ने विनती करी जो महाराज कृपा करी के चतुर्भुज दास को नाम सुनाइए। तब श्री गुसाई जी आप मुस्काई के कहे जो राजभोग सरे पाछे नाम निवेदन दो संग करावेंगे। यह सुनी के चतुर्भुज दास ताही समय किलक के हसे श्रीनाथ जी। तब कुमनदास जी मन में बहुत प्रसन्न भये। पाछे राजभोग सराइवे के समय भयो तब माला बोली। तब श्री गुसाई जी ने भीतरियान को आज्ञा दीनी जो तुम बाहर जाओ। तब सब भीतरिया पोरिया सब बाहर जाए बैठे। ता समय मंदिर में श्री गोवर्धन नाथ जी और कुमनदास जी रहे। ता समय श्री गुसाई जी चतुर्भुज दास को नाम सुनाए। पाछे तुलसी लेके कुमनदास से कहे जो चतुर्भुज दास को आगे लाओ। सो श्री गोवर्धन नाथ जी के सन्मुख चतुर्भुज दास को ब्रह्म संबंध करवायो। पाछे तुलसी श्री गोवर्धन नाथ जी के चरण कमल पर समर्पे। सो ताही समय सगरी लीला की स्फूर्ति चतुर्भुज दास को भई और श्री गुसाई जी को स्वरूप हृदयारूढ़ भयो। तब ताही समय चतुर्भुज दास ने यह कीर्तन गायो। वाला वैष्णवो ध्यान आपजो चतुर्भुज दास जी केवड़ा नाना छे अने पद गाई रह्या छे। सेवक की सुख राशि सदा श्री वल्लभ राजकुमार, दर्शन ही ते होत प्रसन्न मन श्री पुरुषोत्तम लीला अवतार। सुदृष्टि चित्ते सिद्धांत बतायो लीला एक अनुसार, यह त्यजी आन ज्ञान को धावत भूले कुमति विचार। जाके कहे गही भुज दृढ़ करी श्री गिरधर नंद दुलार। चतुर्भुज प्रभु उधरे पतित श्री विठ्ठल कृपा उदार। यह कीर्तन चतुर्भुज दास जी ने गायो। सो सुनी के श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न भय और कुमनदास जी भी प्रसन्न भय, अपने मन में आनंद पाए और कहे चुमो को जैसो मनोरथ હતો तैसे ही भगवदियों को संग मिलियो। ता पाछे मंदिर के किवाड़ खुले, सब लोगन को दर्शन भये। पाछे श्री गुसाई जी गोवर्धन नाथ जी की आरती करी के श्री गोवर्धन नाथ जी को अनुसर करवाए और माला बीड़ा लेके श्री गुसाई जी पर्वत के नीचे उतरी अपनी बैठक में पधारी। तब तहाँ सब वैष्णव हुआ है, तहाँ कुमनदास जी चतुर्भुज दास जी को लेके आए। तब सबन के आगे चतुर्भुज दास मुग्ध बालक हो चुप करी रहे। ता पाछे श्री गुसाई जी सब वैष्णवन को विदा किए। पाछे आप श्री गुसाई जी भोजन करवे को पधारे। ता पाछे श्री गुसाई जी आप कृपा करी के अपने श्री हस्त सो कुंभनदास चतुर्भुज दास को अपनी जूठन की पातरी धरी। ध्यान आपजो वैष्णवो, हवे जूठन ની પાતરી આવી એટલે
ગુસાઈજીએ પ્રસાદ લીધો હોય પછી જે પાછળ બચ્યું હોય એને જૂઠન કી પાતરી કહેવાય। સો ઉન દો जनन ने महाप्रसाद लियो। पाछे श्री गुसाई जी गादी ऊपर बिराजे। सो बीड़ा आरोगत रहते। तब कुमनदास जी चतुर्बुदास जी आचमन करी के श्री गुसाई जी के पास आए। तब श्री गुसाई जी कृपा करी के दो उनको न्यारो न्यारो उगार दिए। उगार एटले चरवी तांबूल अधरामृत एटले श्री गुसाई जी कृपा करीने बन्नेने चरवी तांबूल आप्યું। ता पाछे श्री गुसाई जी विश्राम करन को पधारे। तब कुमनदास जी चतुर्बुदास जी को गोदी में लेके श्री गुसाई जी को दंडवत करी के जमनावती गांव में अपने घर में आए। सो जब एकांत में कुमनदास जी बैठे हुए तब चतुर्बुदास जी श्री गोवर्धननाथ जी की वार्ता लीला को भाव और श्री आचार्य जी गुसाई जी की वार्ता करे। तब दो जने परस्पर आनंद को पावे। और जब को तीसरो जन आवे तो चतुर्बुदास बालक की नाय मुग्ध होई रहे। और जा दिन ते चतुर्बुदास नाम समर्पण पाए हतो ता दिन ते श्री गोवर्धननाथ जी के दर्शन किए बिना चतुर्बुदास दूध न पीवते। ऐसे करत करत बरस 5 के भये। तो चतुर्बुदास ने सो दर्शन करते। सो वे चतुर्बुदास ऐसे भगवदीय हते। આપણે આખી વાર્તા નહીં લઈએ પરંતુ અધરામૃતનો ચરવી તાંબૂલનો પ્રભાવ કેવો છે। શ્રી ગોવર્ધનનાથજી શ્રીનાથજી દરરોજ ચતુર્બુદાસ સાથે ખેલતા એમને દર્શન આપતા। આ વાર્તામાં આવે છે કે જ્યારે શ્રીનાથજી સતગરા પધાર્યા ત્યારે ચતુર્બુદાસજીને ખૂબ જ વિરહ થયો અને ગાયું ગોવર્ધનવાસી સાવરે લાલ તુમ બિન રહ્યો ન જાય। એટલે એટલો એને એટલો વિરહ થયો કે પદ પૂરું ન થયું ને ત્યાં તો શ્રીનાથજી પધાર્યા એવું વર્ણન આવે છે। એટલે આખી વાર્તા જોઈએ તો આપણને સમજાય। એટલે ગુરુ કૃપા વિચારે ત્યારે અધરામૃત પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે ચરવિત તાંબૂલ પ્રાપ્ત થાય અને ચરવિત તાંબૂલ પ્રાપ્ત થાય તે કંઈક તો બોલે અને સાનુભવ જતાવે। આ રીતે અધરમ મધુરમ, પ્રભુના અધર મધુર છે, અધરામૃત મધુર છે। એટલે આપણે વાલા વૈષ્ણવો ભાગવતજી, શિક્ષાપત્ર, 84-252 વૈષ્ણવની વાર્તા બધામાંથી અધરામૃત વિશે સમજ્યા। એટલે આ એક જ આટલા સત્સંગમાં આપણે બધા પુસ્તકોનું પણ સાથે લઈ લીધું અને ચિંતનમાં પણ આનંદ આવ્યો। કરે કરાવે શ્રીનાથજી। ઘણા વખતથી આ મનોરથ હતો અને આજે ને આજે જ આ શિક્ષાપત્રનો વિચાર આવ્યો કે આપણે આમાં ભાગવતજી છે, 84-252 વૈષ્ણવની વાર્તા છે તો શિક્ષાપત્રનો પણ કંઈક એડ કરીશું। ત્યારે ખબર નહોતી પરંતુ તરત પ્રભુએ પ્રેરણા કરી અને અધરામૃતના જે પ્રસંગો શિક્ષાપત્રમાં હતા તે આપણે સાથે લીધા। એટલા પ્રભુનો મનોરથ હોય ત્યારે જ સિદ્ધ થાય। બોલો શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય, શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય, શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી કી જય, 84-252 ભગવદીઓ કી જય। આજનો આ સત્સંગ શ્રીનાથજી, શ્રી યમુનાજી અને શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરું છું અને શ્રી ગોવર્ધનનાથજીના ચરણારવિંદમાં એ જ વિનંતી ધરું છું કે હે પ્રભુ, એક નાનું બાળક જે રીતે કાલાઘેલી બોલીમાં પોતાના દાદાને પ્રસન્ન કરવાનો પ્રયાસ કરતા હોય તેવી રીતે અમે પણ એક તુચ્છ ચેષ્ટા કરી રહ્યા છીએ, પરંતુ આપ અમારા પર પ્રસન્ન રહો।